Hello everyone, very good morning to all of you, and once again welcome to Wallah team. Am I audible, visible? Good morning Amit, good morning Shivam, Sangam, good morning. Am I audible, visible? Good morning, good morning. Am I audible, visible? Good morning Mithun, good morning. Shubham, Sonia, good morning. Abhishek, good morning. Manish. Okay. So चलिए start करें. Good morning to all of you once again. Good morning, very good morning to all of you. Okay. सो सेशन स्टार्ट करने से पहले ये आपके पास जो अपकमिंग सेशन है, अपकमिंग सेशन का आपके पास कंप्लीट शेड्यूल, राइट। अपकमिंग सेशन जो है, अपकमिंग सेशन का आपके पास कंप्लीट शेड्यूल और आपके पास टाइमिंग आप लोगों को पता है, ठीक है। मॉर्निंग टाइमिंग आपके पास 8 to 12 आपके पास रहने वाला है फ्लूइड मैकेनिक्स, फिर 1 to 5 रहने वाला है आपके पास सॉलिड मैकेनिक्स, देन 6 to 10 आपके पास रहने वाला है थर्मोडाइनमिक्स, और आपके पास 11 to 3 आपके पास 11 to 3 AM आपके पास रहने वाला है मैथमेटिक्स, राइट। सो ये आपके पास कंप्लीट शेड्यूल PYQ सीरीज का, राइट। और कंप्लीट टीम से तो आप परिचित है ही अच्छे से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, लास्ट सेशन में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। चलिए तो ये क्वेश्चन है, ये एक ऐसा क्वेश्चन आपके पास मैकेनिकल में भी क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है भाई, मैकेनिकल में भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है। चलिए देखेंगे क्वेश्चन को, कोशिश करेंगे आंसर करने का। देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ऐसा क्वेश्चन मैकेनिकल में भी आ चुका है ना, और ये एक्सी में भी आया हुआ है, और ऐसे क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन हमेशा रहती है। सो क्वेश्चन में बोला हुआ है, अ ब्लॉक इज फ्लोटिंग एट द ऑयल वाटर इंटरफेस एज शोन इन द फिगर। द डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज 2/3 ऑफ दैट ऑफ वाटर, राइट। द डेंसिटी ऑफ द ऑयल, ऑयल की जो डेंसिटी है इसके बारे में आपसे कमेंट किया हुआ है कि ऑयल की जो डेंसिटी है दैट इज 2/3, राइट। 2/3 है आपके पास वाटर की डेंसिटी का, ये क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। एंड गिवन दैट द डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक की जो डेंसिटी है, ठीक है, ब्लॉक की जो डेंसिटी है ये आपको क्वेश्चन में गिवन है 800 kg पर मीटर क्यूब, 800 kg पर मीटर क्यूब, ये आपको गिवन है, राइट। एंड दैट ऑफ द वाटर, वाटर की डेंसिटी आपके पास गिवन है ना, वाटर की डेंसिटी आपके पास गिवन है, और वाटर की जो डेंसिटी है दैट इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। सो क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द ब्लॉक इन ऑयल इज, राइट। आपको फ्रैक्शन के ऊपर कमेंट करना है। सो लेट अस एज्यूम आपके पास, ये आपके पास हो गया फ्लूइड नंबर 1 बोल लीजिए, इसको आप फ्लूइड नंबर 2 बोल लीजिए, है ना। इसको आप फ्लूइड नंबर 1 बोल लो, इसको आप फ्लूइड नंबर 2 बोल लो। और यहां से अगर आप देखोगे ये टोटल हाइट आप ले लीजिए, कितना टोटल हाइट आप ले लीजिए, दैट इज h, दिस इज द टोटल हाइट h आपके पास है ना। कितना आंसर आ रहा है भाई? अच्छा ये हो गया था क्या? अच्छा ये हो गया था क्या? ये हो गया था क्या? ओके, आई थिंक विनय सर ने करवाया था, फिर ये हो गया था तो आगे बढ़ता हूँ फिर मैं। अच्छा ये हो गया था, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन हो गया था, ये क्वेश्चन हो गया था क्या कल की क्लास में? 0.6 कुछ आया था क्या? ओके, ठीक है, ओके ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हो गया था। चलिए ये क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन हो गया था क्या? आई थिंक ये नहीं हुआ था, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नहीं हुआ होगा, ये क्वेश्चन देख लो जी, देख लीजिए, ये क्वेश्चन हुआ था क्या, ये भी बता दो भाई।
देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, देखो भाई इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला हुआ है, द टेम्परेचर फील्ड इन अ फ्लूइड फ्लो इज गिवन बाई 60 माइनस 2xy डिग्री सेल्सियस, द वेलोसिटी फील्ड v is equal to 2xy I cap plus ty j cap meter per second. The rate of change of temperature measured by thermometer moving along with the flow at 2 minus 4 meter at t is equal to 4 second is. So basically यहाँ पे rate of change of temperature के ऊपर comment करना है. The rate of change of temperature measured by the thermometer. Rate of change of temperature के ऊपर आपको यहाँ पे comment करना है. राइट और कभी भी आपको क्वेश्चन में ऐसा बोलता है कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ कोई भी प्रॉपर्टीज आपको फाइंड आउट करनी है, मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है टोटल डेरिवेटिव, है ना। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है, जैसे यहाँ पे बोला हुआ है टेम्परेचर, सो टेम्परेचर फील्ड आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है टेम्परेचर फील्ड आपको गिवन है T इज इक्वल टू 60 माइनस 0.2xy, ये आपको गिवन है, ठीक है, दिस इज अ टेम्परेचर फील्ड। और अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर की बात करूं तो वेलोसिटी वेक्टर आपके पास गिवन है, कितना गिवन है भाई वेलोसिटी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास 2xy I कैप और ये हो जाएगा प्लस, ये हो गया ty और ये हो गया आपके पास j कैप, राइट। यहां से आप कंपेयर करोगे तो ये आपके पास u है ना, ये आपके पास है u I कैप प्लस v j कैप से कंपेयर करोगे और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है v, राइट। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास हो गया u और ये हो गया आपके पास v। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब आपको फाइंड आउट करना है डी टी बाई डी टाउ, राइट, या फिर मैं बोल देता हूं चलिए टी, या फिर आप बोल सकते हैं इसी को दिस इज डी टी बाई, ये हो गया डी टी, राइट। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, सो दिस इज नथिंग बट द, ठीक है, मटेरियल डेरिवेटिव ऑफ द टेम्परेचर और यू कैन से यूलर डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर और यू कैन से सब्सटेंशियल डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर, एंड दिस इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं भाई, ये हो जाएगा आपके पास डेल टी बाई डेल टी प्लस ये हो गया u, ये हो गया डेल टी बाई डेल एक्स प्लस ये हो गया v, ये हो गया डेल टी बाई डेल y प्लस ये हो गया w और ये हो गया डेल टी बाई डेल z, है ना। इसी तरीके से निकाल सकते हैं, राइट, इसी तरीके से निकाल सकते हैं, बताइएगा जल्दी से, है ना। तो अब यहां से अगर आप देखोगे तो ये वाला टर्म आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म तो आपके पास हो जाएगा जीरो, ये वाला टर्म हो जाएगा आपके पास जीरो। टेम्परेचर जो है वो टाइम का फंक्शन नहीं है, तो टाइम का फंक्शन नहीं है तो ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा, दिस टर्म इज ऑल्सो जीरो। सो यहां से अगर आप देखेंगे, राइट, यहां से अगर आप देखोगे तो ये हो गया आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास u डेल टी बाई डेल एक्स प्लस ये हो जाएगा v और ये हो गया डेल टी बाई, ये हो जाएगा डेल टी बाई डेल वाई, राइट, यही होगा आपके पास। बाकी आपके पास गिवन है यहाँ पे आपके पास u 2xy, ये हो जाएगा यार आपके पास 2xy, राइट, और डेल टी बाई डेल एक्स तो ये हो गया आपके पास माइनस हो जाएगा 0.2y, ये हो जाएगा माइनस 0.2y, राइट, प्लस v आपके पास कितना गिवन है, v आपके पास गिवन है ty, ये हो जाएगा आपके पास ty, राइट, और डेल टी बाई डेल वाई, सो डेल टी बाई डेल वाई आपके पास हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 0.2x, ये हो गया, राइट। सो यहां से आपके पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू, राइट, माइनस 0.4 एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा t इंटू वाई और आई कैन से 0.2 t इंटू एक्स वाई। चलिए कहाँ पे निकालना था ये आपको कहाँ पे निकालना है, x इज इक्वल टू, ठीक है, ये आपको कहाँ पे निकालना है, ये आपको निकालना है x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -4 और ये हो गया आपके पास t इज इक्वल टू 4, एंड दिस इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 0.4x, x की वैल्यू आपके पास है 2 इंटू वाई की वैल्यू आपके पास हो जाएगा -4 का स्क्वायर माइनस 0.2 इंटू टी की वैल्यू आपके पास है 4 इंटू एक्स की वैल्यू आपके पास हो गई कितनी, एक्स की वैल्यू आपके पास हो गई 2, एक्स की वैल्यू आपके पास हो गई 2
राइट, और y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू आपके पास हो गया -4। राइट, यहां से बता देना कितना आ रहा है ये, यहां से बता देना कितना आ रहा है। -6.4 आ रहा है क्या, चेक करना। -6.4 डिग्री सेल्सियस, -6.4 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड, ऐसा कुछ आ रहा है क्या, चेक करना। चेक करो जल्दी से, यही आ रहा है क्या, -6.4। सो द करेक्ट आंसर इज चेन्नई, सी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज सी इज द करेक्ट आंसर। ओके 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 ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास फ्लूइड काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के लिए आपके पास आया था 2011 में। राइट, आपको वोल्टिसिटी फाइंड आउट करने बोला है। इस क्वेश्चन में आपको वोल्टिसिटी फाइंड आउट करने बोला है। और देखो एक चीज मैंने आपको पहले बताई हुई है कि अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो आपके पास देखो फ्लूइड काइनेमेटिक्स हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। राइट, हर साल आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स से, चाहे आप मैकेनिकल की बात करिए या फिर एक्सी की बात करिए। ठीक है, क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो। वोल्टिसिटी फाइंड आउट करना है, तो वोल्टिसिटी बेसिकली होता क्या है यार, व्हाट इज द वोल्टिसिटी। अगर मैथमेटिकली अगर मैं बात करूं, दैट वोल्टिसिटी इज इक्वल टू, दिस इज अ 2 टाइम्स ऑफ रोटेशन वेक्टर ना। क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रोटेशन वेक्टर होता है कि नहीं होता, यही तो होता है ना। और यहां से अगर आप देखोगे, यहां से अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू, और रोटेशन वेक्टर क्या होता है, दिस इज अ हाफ ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर वी, हाफ ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर वी। राइट, मतलब ये हो गया आपके पास कर्ल ऑफ वेक्टर वी, दैट मींस डेल्टा क्रॉस वेक्टर वी। ये हो गया, डेल्टा क्रॉस वेक्टर वी निकालना है, डेल्टा क्रॉस वेक्टर वी निकालना है, तो ये हो जाएगा आपके पास आई कैप जे कैप, और ये हो गया के कैप, और ये हो गया डेल बाई डेल एक्स, ये हो जाएगा डेल बाई डेल वाई, ये हो जाएगा डेल बाई डेल जेड। राइट, और ये हो जाएगा आपके पास यू वी, और ये हो गया आपके पास डब्ल्यू। ये हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो आपके पास वेलोसिटी वेक्टर गिवन है, मतलब आपके पास u दे दिया है। यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे यू आई कैप प्लस वी जे कैप से, यू आई कैप प्लस वी जे कैप से कंपेयर करोगे तो u आपको दे दिया है 2xy, और v आपको दे दिया है कितना, v आपको दे दिया है 3y। राइट, u आपको दिया है 2xy और v आपको दिया है, v आपको दे दिया है 3y। यहाँ पे सॉल्व कर लो। सो यहाँ से अगर आप देखोगे डेल्टा क्रॉस वेक्टर v, डेल्टा क्रॉस वेक्टर v इज इक्वल टू, दिस इज आई कैप जे कैप के कैप, ये हो गया डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, और ये हो गया डेल बाई डेल जेड। राइट, नाउ सी यहां से अगर आप देखोगे तो यू आपके पास है 2xy, ये हो गया आपके पास 2xy, v आपके पास कितना हो गया, v आपके पास हो गया 3y, v हो गया 3y। और अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं z, z तो आपके पास 0 है, ये हो गया आपके पास 0। राइट, तो यहां से सॉल्व कर सकते हैं डिटर्मिनेंट, तो ये हो गया i, ये हो जाएगा 0, है ना, और ये भी हो जाएगा 0 माइनस जे। राइट, ये हो जाएगा आपके पास 0, और यार ये भी हो जाएगा 0, है ना, क्योंकि ये z का फंक्शन तो है नहीं, ये हो जाएगा ये भी 0 प्लस के। राइट, और ये हो जाएगा आपके पास 0, और ये आ जाएगा आपके पास यार -2x। चेक करना भैया, है ना, चेक करना आप लोग भी। तो ये आ रहा है आपके पास -2x, ये आ गया आपके पास के कैप। राइट, अच्छा x की वैल्यू हमें कहाँ पे निकालना था, वोल्टिसिटी पॉइंट दिया होगा 2 4 पे निकालना है, मतलब x की वैल्यू 2, है ना, x की वैल्यू 2, तो ये हो गया -2, यानी हो जाएगा -4 के कैप, -4 के कैप। तो ये हो गया आपके पास वोल्टिसिटी कहाँ पे, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4, यही क्वेश्चन में आपसे पूछा था। तो ये आ रहा है आपके पास -4 के कैप, -4 के कैप, सो -4 के कैप, ए इज द करेक्ट आंसर। राइट, यस यस, बहुत बढ़िया, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है, बिल्कुल ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये भी क्वेश्चन आपके पास 1 मार्क्स का क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन भी आपके पास 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखेंगे। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो 1 मार्क्स क्वेश्चन, है ना। डायमेंशनल डायमेंशनल सिमिलिट्यूड प्रिंसिपल का क्वेश्चन है ये, बेसिकली डायनामिक सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है। क्या आएगा देखेंगे। ओके देखो यहाँ पे कौन सा फ्लो है, ओपन चैनल फ्लो है, ठीक है। थोड़ा सा आप इस चीज़ों को समझेंगे। जब हम डिफरेंट मॉडल लॉ की बात करते हैं, डिफरेंट मॉडल्स लॉ, तो आपके पास जैसे रेनॉल्ड मॉडल लॉ, तो जहाँ पे भी आपके पास विस्कस फोर्स प्रिडोमिनेंट हो जाता है, विस्कस फोर्स जहाँ पे प्रिडोमिनेंट होता है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं क्या, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं रेनॉल्ड मॉडल लॉ। जहाँ पे ग्रेविटी फोर्स प्रिडोमिनेंट होता है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं फ्रॉड मॉडल लॉ। जहां पे आपके पास सरफेस टेंशन फोर्स प्रिडोमिनेंट होता है, सरफेस टेंशन फोर्स प्रिडोमिनेंट होता है, वहां पे हम यूज करते हैं वेबर मॉडल लॉ। जहां पे प्रेशर फोर्स प्रिडोमिनेंट होता है, वहां पे हम यूज करते हैं यूलर मॉडल लॉ। और जहां पे आपके पास कंप्रेसिबिलिटी जो इफेक्ट है वो प्रिडोमिनेंट होता है, वहां पे यूज करते हैं मैक मॉडल लॉ। तो ये जो डिफरेंट मॉडल लॉ है ना, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। तो जैसे आप देखोगे ओपन चैनल फ्लो, जो ओपन चैनल फ्लो आपके पास आ गया, तो ओपन चैनल फ्लो में आपके पास जो फ्लो होता है, दैट फ्लो इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, है ना। ग्रेविटी के कारण से आपके पास फ्लो होता है। जैसे पाइप फ्लो की जब हम बात करते हैं, तो पाइप फ्लो जो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस, है ना। प्रेशर डिफरेंस के कारण से आपके पास फ्लो होता है। देखो अल्टीमेटली फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, अल्टीमेटली फ्लो होने के लिए चाहिए होता है एनर्जी डिफरेंस, है ना। अल्टीमेटली फ्लो होने के लिए चाहिए आपको क्या, एनर्जी डिफरेंस। तो जब हम पाइप फ्लो की बात करते हैं, तो पाइप फ्लो में जो एनर्जी डिफरेंस है वो किस फॉर्म में मिलता है आपको, प्रेशर डिफरेंस के फॉर्म में। वही जब हम ओपन चैनल फ्लो की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो आपके पास एनर्जी में जो डिफरेंस है वो कैसे मिलता है आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस के फॉर्म में। मतलब आप समझ रहे हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस। तो यहाँ पे आपके पास ओपन चैनल फ्लो के केस में ग्रेविटी फोर्स प्रिडोमिनेंट होता है, और ग्रेविटी फोर्स अगर प्रिडोमिनेंट है, तो आपके पास कौन सा मॉडल लॉ एप्लीकेबल होगा, आपके पास फ्रॉड मॉडल लॉ जो है वो एप्लीकेबल होता है, राइट। तो यहाँ पे आपके पास ग्रेविटी फोर्स प्रिडोमिनेंट है, तो आप सिंपली लिखते हैं कि भाई फ्रॉड नंबर फॉर द मॉडल इज इक्वल टू फ्रॉड नंबर फॉर द प्रोटोटाइप। अच्छा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी आपको याद होना चाहिए, है ना। एक बार आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूछा हुआ था, तो ये हो जाएगा आपके पास u बाई रूट ओवर एल जी, ये हो गया मॉडल के लिए, और ये हो गया u बाई, ये हो गया रूट ओवर एल जी, ये हो गया आपके पास प्रोटोटाइप के लिए, ठीक है ना। ये हो गया आपके पास। तो यहाँ से अगर आप देखोगे g और g आपके पास कैंसल आउट हो जाएगा, और सिंपली यहाँ से हम ये लिख सकते हैं भाई, ये हो जाएगा u m बाई, ये हो गया up, u m बाई यूपी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा रूट ओवर एल एम बाई एल पी, ये हो जाएगा एल एम बाई एल पी, एंड दिस इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं दिस इज एल आर, एल एम बाई एल पी मतलब स्केल रेशियो, राइट। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, ये हो जाएगा एल आर, और एल आर टू द पावर 1/2, एल आर टू द पावर 1/2, ये हो गया, राइट। तो यहां से ये समझ में आ गया, एल आर क्या, स्केल रेशियो। सो यू एम बाई यू पी इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास एल आर टू दी पावर 1/2। अब आ जाते हैं, देखो यू एम आपको दिया है क्या, नहीं, ये तो निकालना है। प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप के लिए आपको दिया है स्पीड, तो ये हो जाएगा यू एम बाई, ये हो गया 5, एंड दिस इज इक्वल टू, राइट। एल आर की वैल्यू आपको गिवन है 1/25, ये हो जाएगा टू दी पावर 1/2। तो यहां से अगर देखोगे ये हो गया 5, तो यू एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो आप इसको डायरेक्टली याद रख लेना, दिस इज इक्वल टू, ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। वैसे ही आपके पास स्केल रेशियो इन डिस्चार्ज आपको पता होना चाहिए, वैसे ही आपको स्केल रेशियो इन दी स्केल रेशियो इन डिस्चार्ज आपको पता होना चाहिए, स्केल रेशियो इन फोर्स आपको पता होना चाहिए, स्केल रेशियो इन एक्सलेशन आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, द करेक्ट आंसर इज बॉम्बे, बी इज द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज बॉम्बे, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके देखिए क्वेश्चन को क्या बोला हुआ है। पिटॉट ट्यूब है ना, पिटॉट ट्यूब है, पिटॉट स्टैटिक प्रॉब इज इंसर्टेड इन एयर फ्लो, अ मैनोमीटर कनेक्टेड टू दिस प्रॉब having mercury as the manometer fluid shows a sorry uh, a manometer connected to this probe having mercury as the manometric fluid shows a difference of 30 mm. Assume a probe factor is equal to 1, assuming density of the air 1.23 kg per meter cube और मरकरी की डेंसिटी आपको गिवन है, राइट जरूर जरूर जरूर। और आपके पास डेंसिटी जो है मरकरी का आपके पास गिवन है 13600 केजी पर मीटर क्यूब, जी गिवन है। स्पीड ऑफ द एयर आपको फाइंड आउट करना है ना, जो एयर की जो स्पीड है, एयर की स्पीड आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो जब भी आपके पास पिटॉट ट्यूब का क्वेश्चन आता है ना, आपके पास 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ना, आपके पास 3 स्टेप में आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, देखो कुछ नहीं करना है आपके पास, थोड़ा ध्यान से समझना है इसको, है ना, क्योंकि पिटॉट ट्यूब से क्वेश्चन पहले भी आते गए और ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें अच्छा सॉरी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है क्या, चलो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब ये बोनस क्वेश्चन है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखो 3 स्टेप में इसका आंसर आएगा, 3 से चौथा स्टेप नहीं लगता इसका आंसर आने में, ठीक है ना। तो यहां से अगर आप देखोगे, देखो भाई मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफली ड्रॉ कर रहा हूं, राइट। चलिए इस तरीके से आपके पास ये हो गया पिटॉट ट्यूब, ये हो गया पॉइंट नंबर 1, ये हो गया पॉइंट नंबर 2, ठीक है। अब आपके पास डेफिनेटली पॉइंट नंबर 2 आपके पास क्या है, द पॉइंट नंबर 2 इज अ स्टैग्नेशन पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 आपके पास क्या है, द पॉइंट नंबर 2 इज अ स्टैग्नेशन पॉइंट। और ये जो आपके पास, ठीक है, जो प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए आपने यहाँ पे मैनोमीटर फिट किया हुआ है, डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर फिट किया हुआ है, इसमें जो आपके पास जो लिक्विड है वो लिक्विड आपके पास क्या है, मरकरी है, ऐसा करके आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक। अब देखो ऑब्वियसली आपके पास अगर मैं 1 और 2 पे आपको बोलूं कि भाई कहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, कहाँ पे प्रेशर कम होगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 इज अ स्टैग्नेशन पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 आपके पास क्या स्टैग्नेशन पॉइंट है, तो डेफिनेटली पॉइंट नंबर 2 पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना, पॉइंट नंबर 2 पे प्रेशर ज्यादा होगा। अब देखो यहाँ पे, तो जो आपके पास जो मैनोमेट्रिक लिक्विड है इस साइड पे प्रेशर ज्यादा होगा, तो जो मैनोमेट्रिक लिक्विड है इस मैनोमेट्रिक लिक्विड पे आपके पास इस तरीके से आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। और ये डिफ्लेक्शन को मैं मान लेता हूं कि ये डिफ्लेक्शन क्या है, ये डिफ्लेक्शन एक्स है। ये डिफ्लेक्शन कितना है, ये डिफ्लेक्शन आपके पास एक्स है, ये मैंने क्या कर लिया, ये मैंने मान कर लिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, हमको निकालना क्या है, हमको यहाँ पे 1 पे वेलोसिटी निकालनी है, यहाँ पे हमको 1 पे वेलोसिटी निकालनी है, राइट, यहाँ पे हमको 1 पे वेलोसिटी निकालनी है। तो लेट अस अज्यूम दैट 1 पे जो वेलोसिटी है, राइट, जो आपके पास पॉइंट नंबर 1 से जो लेयर पास हो रही है उसकी जो वेलोसिटी है, दैट वेलोसिटी इज v1। हमें v1 क्या करना है, v1 फाइंड आउट करना है। सो v1 फाइंड आउट करना है, बर्नौली इक्वेशन लगाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे खैर जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम कर रहे हैं, v1 इज इक्वल टू ये हो गया cv, ये हो गया √/2g, ये हो गया h। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज समझना, राइट, cv की वैल्यू दिस इज अ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी नहीं गिवन है, आप क्या ले लेना, 1 ले लेना, ठीक। और ये हो जाएगा v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज √, ये हो गया आपके पास 2 × g, राइट। अच्छा अब यहाँ पे h क्या है, h आप समझना, h है डिफरेंस इन द पीजोमेट्रिक हेड, h क्या है भैया, h आपके पास है डिफरेंस इन द पीजोमेट्रिक हेड, राइट। और ये जो h है, इस h को आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू ये हो जाएगा x, और ये हो गया ρm बाई, ये हो गया ρf-1, ठीक है, मॉड में है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास किस में है, ये आपके पास मॉड में है, ठीक है, क्योंकि कई बार आपके पास क्या होता है आपको पता है, ये जो आपके पास मैनोमीटर है, ये मैनोमीटर इन्वर्टेड भी हो सकता है। इन्वर्टेड क्यों यूज करते हैं, इन्वर्टेड यूज करते हैं सो दैट कि हम सेंसिटिविटी को बढ़ा पाए, जो हमारा डिफरेंशियल मैनोमीटर है उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा ले, इसीलिए हम यूज करते हैं क्या, इन्वर्टेड इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर भी हम यूज करते हैं। तो जब इन्वर्टेड होगा उस टाइम पे आपके पास क्या होगा, उस टाइम पे आपके पास जो मैनोमेट्रिक लिक्विड की जो डेंसिटी है वो कम होगी, किससे, फ्लूइड की डेंसिटी से, जो फ्लोइंग फ्लूइड है, राइट। और अगर आपके पास इस तरीके का मैनोमीटर है तो इसमें आपके पास क्या दिख रहा है, मैनोमेट्रिक लिक्विड की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है, किससे, फ्लूइड की डेंसिटी से, राइट। यहाँ पे मॉड लेने का पर्पस क्या है, मॉड लेने का पर्पस है कि अगर इसको इन्वर्ट भी कर दो तो भी आपके पास कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि अल्टीमेटली हमें मॉड लेना है और मॉड हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से h निकाल लो, सो h इज इक्वल टू व्हाट इज द x, ये x है, ध्यान से ना, ये x है आपके पास, और ये x आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है, ये आपको गिवन है 30 mm, 30 mm मतलब ये हो जाएगा 0.03 डिवाइडेड बाई
रो एम आपके पास कितना, मतलब मैनोमेट्रिक लिक्विड की डेंसिटी आपके पास हो गया 13600 डिवाइडेड बाई आपके पास फ्लूइड की डेंसिटी आपके पास कितना गिवन है, मतलब जो फ्लोइंग फ्लूइड ऑफ एयर है ये हो गया 1.23 -1। तो यहां से आपके पास क्या निकल जाएगा, यहां से आपके पास निकल जाएगा h। एंड वंस यू नो द h, एक बार h आपसे निकल गया तो आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से v1 निकाल सकते हैं, बड़ी आसानी से आप क्या कर सकते हैं, v1 निकाल सकते हैं। राइट, तो तीन ही स्टेप में इसका आंसर आ जाता है। राइट, फॉर्मूला है v1 इज इक्वल टू CV √2gh, बट h के बारे में आपको पता होना चाहिए। राइट, h क्या है, h है डिफरेंस इन द पीजोमेट्रिक हेड। राइट, ये h x नहीं है, तो आपको h निकालना पड़ेगा। h निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा। राइट, ये यूज कर लीजिएगा, डायरेक्टली आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ना बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं होती है। ठीक है, आप एकदम बेसिक से जाएंगे, बर्नौली क्वेश्चन देखेंगे तो फिर थोड़ा सा फिर आपको लेंदी पड़ेगा, तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं। कितना आंसर आ रहा है भाई इसका, 81.5 कुछ आ रहा है क्या, बॉम्बे आ रहा है, बॉम्बे आ रहा है क्या, बी आ रहा है क्या, चेक कर लेना। वेलोसिटी v1, सो v1 इज इक्वल टू 81.5 मीटर पर सेकेंड, 81.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 81.5 मीटर पर सेकेंड करेक्ट है। चलिए भाई, ये आपके पास गेट 2011 का ही क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये भी। क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, कंसिडर एन एल शेप्ड गेट विथ वाटर लेवल अबव द हिंज एज शोन एट approximately what height d of the water level will the gate open, neglect the mass of the gate, assuming g is equal to 10 meter per second square, assuming g is equal to 10 meter per second square। तो बेसिकली आपको क्या बताना है, बेसिकली आपको डी के ऊपर कमेंट करना है कि डी कितना होगा। ऑप्शन आपको गिवन है, एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है। चलो थोड़ा सा ट्राई कर लो, देख लो। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स का कॉन्सेप्ट लगेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो यहां पे हिंज है ना, यहां पे आपके पास क्या है भाई, यहां पे आपके पास हिंज है, यहां पे आपके पास क्या है, यहां पे आपके पास हिंज है। अच्छा, तो अगर आप नाम देना चाहो इस गेट का, तो इस गेट का आप नाम देख सकते हो। ये हो गया आपके पास ए, ये हो गया बी, और ये आपके पास हो गया सी। तो सबसे पहले तो आप ये जो ए बी पोर्शन है, गेट का जो ए बी पोर्शन है, उसमें आप हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स निकाल लीजिए। जो ए बी है उस ए बी में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स निकाल लो। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स कैसे निकालोगे, राइट, एफ ए बी। सो एफ ए बी इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास रो इंटू जी इंटू ए इंटू वाई सी, यही आप लिखते हो ना भाई, रो इंटू जी इंटू ए इंटू वाई सी। अच्छा, ये हो गया आपके पास रो जी को तो बिल्कुल वही रहने दो, रो इंटू जी इंटू, राइट। अच्छा, ए क्या हो जाएगा भाई, ए, तो ये हो जाएगा आपके पास डी एंड परपेंडिकुलर टू द मॉनिटर, मॉनिटर के परपेंडिकुलर, लेट अस अज्यूम द विड्थ इज डब्ल्यू, राइट, परपेंडिकुलर टू द मॉनिटर, लेट अस अज्यूम द विड्थ इज डब्ल्यू। सो ये हो जाएगा आपके पास, मैं लिख सकता हूं ना डी इंटू डब्ल्यू, ये हो गया डी इंटू डब्ल्यू इंटू, चलो वाई सी कितना हो जाएगा, यहां से वाई सी आप बता सकते हैं वाई सी कितना हो जाएगा। तो वाई सी तो सिंपल है, आपके पास डी/2 हो जाएगा वाई सी, राइट। जो गेट का ये ए बी पोर्शन के लिए देखना है ना, ए बी पोर्शन के लिए कहां पे एक्ट करेगा, बिल्कुल यहाँ पे आपके पास सेंट्रॉइड पे एक्ट करेगा। तो ये हो जाएगा, सॉरी सेंट्रॉइड यहाँ पे होगा, सॉरी, ये जो ए बी के लिए सेंट्रॉइड जो होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास डी/2, राइट। तो ये हो जाएगा आपके पास रो इंटू जी, रो इंटू जी, और ये हो जाएगा डब्ल्यू, और ये हो गया डी स्क्वायर, राइट, रो जी डब्ल्यू डी स्क्वायर बाई, ये हो गया आपके पास 2, दिस इज द एफ ए बी। अब ये जो एफ ए बी है ये कहां पे एक्ट करेगा, ये जो एफ ए बी है ये कहां पे एक्ट करेगा, तो ये एक्ट करेगा सेंटर ऑफ प्रेशर पे, राइट, सेंटर ऑफ प्रेशर पे। तो सबसे पहले तो आप निकालो वाई सी पी, निकालो किसके लिए, ए बी के लिए, एंड दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास वाई सी प्लस ये हो जाएगा आई एक्स सी अपॉन ये हो जाएगा ए वाई सी, करेक्ट ना भाई।
ना वाई सी, तो यहां से अगर आप देखोगे वाई सी पी ए बी पोर्शन के लिए, वाई सी पी सेंटर ऑफ प्रेशर ए बी पोर्शन के लिए, एंड दिस इज इक्वल टू, यार ये हो जाएगा वाई सी की वैल्यू आपके पास हो जाएगा डी/2, वाई सी का वैल्यू आपके पास हो जाएगा डी/2 प्लस डी/2 प्लस ये हो जाएगा आपके पास आई एक्स सी, सो 1/12, 1/12। अच्छा, आपका जो ये गेट है ना कुछ इस तरीके से है, देखो भाई ये हो गया, ये डब्ल्यू है और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास डी है ना, आई एक्स सी आपको निकालना है, तो यहाँ पे सेंट्रॉइड है, ये आपका एक्स सी हो गया, राइट। सो 1/12 इंटू डब्ल्यू इंटू डी क्यूब, डब्ल्यू इंटू ये हो गया डी क्यूब डिवाइडेड बाई राइट, ये हो जाएगा आपके पास क्या भाई, एरिया आपके पास कितना है, एरिया आपके पास डी इंटू डब्ल्यू, एरिया आपके पास है डी इंटू डब्ल्यू इंटू वाई सी आपके पास हो जाएगा डी/2। यार यहाँ से डब्ल्यू चला गया और ये हो जाएगा डी से ये चला गया और ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1/6 आ गया, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास डी/2 प्लस ये हो जाएगा डी/6। चेक कर लेना ना एक बार, कैलकुलेशन साथ में चेक करते रहना। ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2 3 तो ये हो जाएगा 3D प्लस ये हो गया डी और ये हो जाएगा आपके पास 4D/6, राइट। सो 2 2 एंड 2 3 तो ये हो जाएगा 2D/3, राइट, 2D/3, राइट, ये आ गया आपके पास 2D/3, ठीक है। दिस इज अ वाई सी पी ए बी पोर्शन के लिए, ठीक है भैया। अच्छा, अब आपके पास बीसी पोर्शन के लिए अगर आप देखोगे तो बीसी पोर्शन के लिए तो सबसे पहले आप निकाल लो क्या, एफ बी सी, ये हो गया एफ बी सी, एफ बी सी, चलो ये हो गया रो इंटू जी इंटू ए इंटू वाई सी। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेनर सरफेस है, हॉरिजॉन्टल प्लेनर सरफेस है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेनर सरफेस है तो यहाँ तो आपको देखो रो इंटू जी, तो रो जी तो वही है यार, सॉरी, ये हो गया रो जी तो वही है, एरिया हो जाएगा 2 इंटू ये हो गया डब्ल्यू, परपेंडिकुलर टू द मॉनिटर, विड्थ डब्ल्यू है, एंड वाई सी कितना हो जाएगा, वाई सी, तो देखो भाई इसका जो सेंट्रॉइड होगा इसका फ्री सरफेस से डिस्टेंस ना, फ्री सरफेस से डिस्टेंस हमेशा जो वाई सी होता है, वाई सी क्या होता है भाई, वाई सी जो होता है जो भी प्लेनर सरफेस है उसके सेंट्रॉइड का डिस्टेंस फ्री सरफेस से, ठीक है, फ्री सरफेस से डिस्टेंस होता है, तो फ्री सरफेस से डिस्टेंस क्या होगा, ये तो डी है ना, फ्री सरफेस से जो डिस्टेंस है वो तो आपके पास क्या है, वो तो आपके पास डी ही है, ये हो गया, राइट। चलो ये तो आ गया एफ बी सी, और अगर मैं वाई सी पी बात करूं, वाई सी पी अगर मैं बात करूं किसके लिए, बीसी के लिए, वाई सी पी अगर मैं बात करूं किसके लिए, बीसी के लिए, तो दिस इज इक्वल टू, यार देखो ये कैसे ऐड करने वाला है, आपका जो एफ ये सेंटर ऑफ प्रेशर है इसके लिए, ये हो गया आपका एफ ए बी, और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये हो जाएगा आपका एफ, ये हो गया बी सी, ठीक है, तो सेंटर ऑफ प्रेशर यहीं पे रहने वाला है, तो ये तो आपके पास डी के बराबर ही रहेगा। फ्री सरफेस से डिस्टेंस देखना है भैया, ये जो आपके पास वाई सी का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा फ्री सरफेस से होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास क्या, ये हो गया आपके पास डी। चलो करना भी कुछ नहीं है, ठीक है, आपको करना क्या है, यहाँ पे मोमेंट ले लो हिंज के अबाउट, हिंज के अबाउट मोमेंट, और एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, जब भी हिंज विंज का कॉन्सेप्ट आता है ना, जब भी आपके पास हिंज विंज का जो कॉन्सेप्ट आता है, क्वेश्चन में हिंज विंज कुछ दिखता है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आप हमेशा समेशन मोमेंट अबाउट द हिंज इक्वल टू 0 करने का कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश किया करो, है ना, जब भी आपको हिंज विंज दिखता है क्वेश्चन में तो, ठीक। तो यहां से अगर आप देखोगे, देख लो यहाँ पे नेट मोमेंट अबाउट हिंज, नेट मोमेंट अबाउट हिंज दैट इज इक्वल टू 0, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नेट मोमेंट अबाउट हिंज इज इक्वल टू 0। तो अब देखो ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, ये एफ ए बी है, हिंज के अबाउट मोमेंट लेना है, मतलब हमको ये डिस्टेंस चाहिए होगा, है ना, हमको ये डिस्टेंस चाहिए होगा, हम ऑलरेडी ये डिस्टेंस निकाल चुके हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ एफ ए बी। अच्छा, मोमेंट कैसा आएगा इसका, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, इसका आ जाएगा क्लॉकवाइज आ जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा एफ ए बी मल्टीप्लाइड बाई एफ ए बी मल्टीप्लाइड बाई और ये डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा तुम्हारा दोस्त, ये टोटल है डी, और यहां से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर देना जो कि आपने निकाला हुआ था 2D/3, डी माइनस 2D, डी माइनस ये हो गया 2D/3, ये आ गया आपके पास, है ना। अब देखो, अब यहां से देखो ये वाला आपके पास है, इसका मोमेंट कैसा लगेगा हिंज के अबाउट, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, सो एफ बी सी इंटू ये वाला डिस्टेंस कितना होगा दोस्त, ये वाला डिस्टेंस तो 1 है यार, 1 मीटर, है ना, ये आपके पास टोटल 2 है, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, सो एफ बी सी इंटू 1, एफ बी सी इंटू 1,
इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आप डायरेक्टली देख लो एफ ए बी इंटू ये हो जाएगा तुम्हारे पास d/3 है ना, d/3 हो जाएगा 3d माइनस 2d, और इधर आ जाएगा आपके पास एफ बी सी वैल्यूज पुट कर लीजिए। एफ ए बी वैल्यूज पुट कर लो, एफ ए बी रो जी डब्ल्यू डी स्क्वायर, रो जी डब्ल्यू डी स्क्वायर बाई 2 इंटू ये हो गया d/3 इज इक्वल टू एफ बी सी रो जी ये हो जाएगा रो इंटू जी इंटू डब्ल्यू इंटू रो इंटू जी इंटू डब्ल्यू इंटू 2 इंटू ये हो गया डी, राइट। जो जो जा रहा है भेज दो, रो जी से रो जी आपके पास चला गया है ना, डब्ल्यू से आपके पास डब्ल्यू चला गया, एक डी से आपके पास एक डी चला गया, राइट। तो यहां से आपके पास ये हो जाएगा डी स्क्वायर, कुछ गलत तो नहीं किया, एक बार देख लेना, चेक कर लेना। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 दूना 6, 6 दूना 12, और ये d इज इक्वल टू आ जाएगा √12। √12 मतलब 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, देख लो। √12 मतलब 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, कितना आ रहा है 3.46 आ रहा है क्या, चेक करना, 3.46 आ रहा है क्या। थ्री पॉइंट फोर सिक्स आ रहा है क्या, चेक कर लेना एक बार। $3.46, yes. A is the correct answer. अच्छा, क्या क्लियर है क्या, ये जल्दी बता देना, क्या ये क्लियर है। सर प्लीज एक्सप्लेन एफ बी सी। अरे एफ बी सी ये तो हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया ना, दिस इज अ वर्टिकल सरफेस, ये वर्टिकल सरफेस है और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस, चाहे आप देखो, जब आप प्लेनर सरफेस की बात करते हो तो प्लेनर सरफेस, चाहे आपके पास सरफेस वर्टिकल हो, चाहे आपके पास सरफेस हॉरिजॉन्टल हो, या सरफेस आपके पास इंक्लाइंड हो, देखो ये आपके पास, देखो इधर ध्यान से देखो, इधर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इधर ध्यान से सुनिएगा। जब भी हम प्लेनर सरफेस की बात करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स ऑन प्लेनर सरफेस जब हम कैलकुलेट करते हैं, है ना, तो आपके पास जो प्लेनर सरफेस है यार, प्लेनर सरफेस आपके पास जो ओरिएंटेशन है प्लेनर सरफेस का, या तो यार दोस्त हॉरिजॉन्टल हो सकता है ना, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, या तो आपके पास वर्टिकल हो सकता है, या तो आपके पास कैसा हो सकता है, ओरिएंटेशन आपके पास इंक्लाइंड हो सकता है, राइट। या तो आपके पास हॉरिजॉन्टल हो सकता है, या तो वर्टिकल हो सकता है, या तो इंक्लाइंड हो सकता है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल बोल रहा हूं तो हॉरिजॉन्टल मतलब आपके पास ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इस तरीके से प्लेट है, राइट, प्लेट मान लो, हॉरिजॉन्टल सरफेस मान लो, और ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, चलिए ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है फ्लूइड, इस तरीके से। अब आपको देखो, ऐसा में आप समझने की कोशिश करना है ना, देखो आपका जो सरफेस है कैसा हो सकता है, अगर आप देख पा रहे होंगे, जैसे ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल है, ये आपके पास कैसा है, ये हॉरिजॉन्टल। जब आप सामने से देखोगे तो सामने से दिखोगे तो आपको एक लाइन दिखेगी, अगर आप सामने से देखोगे ना तो सामने से देखोगे तो आपको एक लाइन दिखेगी, ये लाइन, यही लाइन तो यहाँ पे दिख रही है। बट व्हेन यू सी फ्रॉम द टॉप, जब आप टॉप से देखोगे तो उसका आपको एक्चुअल में क्रॉस सेक्शन कैसा है वो समझ में आएगा, व्हेन यू सी फ्रॉम द टॉप। तो जब टॉप से आप देखोगे तो आपके पास कैसा भी हो सकता है ना, वो आपके पास रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हो सकता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, ट्रेपेजॉइडल हो सकता है, वो किसी तरीके का भी आपके पास क्रॉस सेक्शन हो सकता है, ठीक है। और इस केस में अगर मैं बात करूं किसकी, ठीक है, तो देखो ये फ्री सरफेस है, मैं फिर से बोल रहा हूं, द फ्री सरफेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। फ्री सरफेस का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये आपके पास क्या है, फ्री सरफेस। जब भी इस तरीके का साइन होता है, इस तरीके का साइन होता है, तो दैट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्री सरफेस। और फ्री सरफेस होता क्या है, ऐसा सरफेस जहां पे प्रेशर किसके इक्वल होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूं तो हॉरिजॉन्टल के केस में एफ, अगर मैं एफ की बात करूं, मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स की अगर मैं बात करूं, इसमें आपके पास जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स है, दिस इज रो इंटू जी इंटू ए इंटू वाई सी, राइट, ये देख लो। और वाई सी, अगर मैं वाई सी की बात करूं तो देखो, इसका जो सेंट्रॉइड होगा वो यहीं पे होगा, और ये जो डिस्टेंस होगा यार, ये जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस इज वाई सी, ये डिस्टेंस आपके पास क्या है, वाई सी। तो रो इंटू जी इंटू ए इंटू वाई सी। और इस केस में आपका जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स है, वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स कैसा एक्ट करेगा,
अगर मैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स की बात करूं तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स कैसा एक्ट करेगा, ये हो गया आपके पास एफ, राइट। कहां पे एक्ट कर रहा है, तो ये वहीं पे एक्ट कर रहा है जहां पे आपके पास क्या है, जहां पे आपके पास सेंट्रॉइड है। मतलब आपके पास जो वाईसीपी है वो किसके इक्वल है, वाईसी के इक्वल है। वाईसीपी किसके इक्वल होगा यार, वाईसीपी वाईसी के इक्वल होगा। अब बात समझ में आप बात समझ पा रहे हो। और आपके पास सेंट्रॉइड में लगने का रीजन क्या है, ये आपके पास जो एफ है वो सेंट्रॉइड पे लग क्यों रहा है, वो सेंट्रॉइड पे लग क्यों रहा है, वो सेंट्रॉइड पे इसलिए लग रहा है क्योंकि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे यूनिफॉर्म होगा ना। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, इफ यू सी द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो दिस इज द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज द यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके पास यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर आपके पास यही वर्टिकल सरफेस, सॉरी, अगर यही प्लेनर सरफेस आपके पास वर्टिकल हो जाए, यही आपके पास प्लेनर सरफेस अगर वर्टिकल हो जाए, जैसे आपके पास ये वाला केस ले लो, है ना, आप ले लो ये वाला केस, देखो देखो यहां पे, सॉरी, अगर आपके पास कुछ इस तरीके से हो जाए, देखो ये, और इधर आपके पास क्या है, इधर आपके पास क्या है, इधर आपके पास है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया आपके पास क्या, ये हो गया आपके पास फ्लूइड, दिस इज द फ्लूइड, राइट। नाउ सी, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है फ्री सरफेस। अब आप कैसे, आपका फ्री सरफेस कैसा हो गया, फ्री सरफेस इज लाइक दिस, ये हो गया फ्री सरफेस आपके पास, ये है। इस साइड में आपके पास क्या है, इस साइड में आपके पास फ्लूइड है। आप सामने से देखोगे तो आपको लाइन दिखेगा, बट व्हेन यू सी फ्रॉम द साइड, जब आप साइड से देखोगे तब उसका एक्चुअल शेप आपको समझ में आएगा कि कैसा है। तो इसीलिए आप देखना, जब आप ऐसा देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है। जब आप साइड से देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये आपके पास कैसा हो सकता है, ये रेक्टेंगुलर हो सकता है, ये ट्रायंगुलर हो सकता है, ट्रेपेजॉइडल हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है यार। व्हेन यू सी फ्रॉम द साइड, तब आपको एक्चुअल में क्रॉस सेक्शन समझ में आएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो, तो ये आपके पास क्या है, आप देख रहे हो कहां से, फ्रंट से देख रहे हो, तो ये आपको दिख रहा है। अब यहां पे देखो भाई, यहां पे अगर आप देखोगे तो ये आपके पास फ्री सरफेस है, सेंट्रॉइड कहां पे होगा, सेंट्रॉइड इसका यहां पे ले लेते हैं, मान लेते हैं यहां पे है सेंट्रॉइड, राइट। तो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये आपके पास वाईसी है। और इस केस में जो आपके पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स होगा, ये तो आपको वही होगा ना, रो इंटू जी इंटू ए इंटू वाई सी। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स वही है, रो इंटू जी इंटू ए इंटू वाई सी, राइट। और अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं, सी, अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं इस केस में वाई सी पी, तो वाई सी पी क्या हो जाएगा, वाई सी प्लस ये हो जाएगा आई एक्स सी अपॉन ये हो गया ए वाई सी, राइट। ये होगा सेंटर ऑफ प्रेशर, राइट। और यहीं पे आपके पास क्या एक्ट करने वाला है, यहीं पे आपका एक्ट करने वाला है एफ। क्लियर है। तो हमेशा डिस्टेंस, चाहे आप वाईसीपी ये आपका सेंटर ऑफ प्रेशर है, और ये सेंटर ऑफ प्रेशर, ये सेंटर ऑफ प्रेशर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्त, ये आपका वाईसीपी होगा, ये आपका वाईसीपी होगा। हमेशा डिस्टेंस देखा जाता है कहां से, फ्री सरफेस से। क्या बात समझ में आ रहा है। और अगर आपके पास इंक्लाइंड होगा, मतलब इस तरीके से आपके पास प्लेनर सरफेस कैसा है, प्लेनर सरफेस आपके पास इस तरीके से इंक्लाइंड है, और इस साइड पे आपके पास, चलो ये मैं मान लेता हूं क्या, ये फ्लूइड है, ये फ्लूइड है, ये फ्लूइड है, राइट। तो अब इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स कितना होगा, व्हाट इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स इस केस में भी आपके पास रो इंटू जी इंटू ए इंटू वाई सी, दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल आपके पास क्या है, ये एंगल मैंने ले लिया थीटा। सो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स क्या होगा, रो इंटू जी इंटू ए इंटू वाई सी। और अगर मैं बात करूं वाई सी पी की, तो वाई सी पी क्या हो जाएगा, दिस इज वाई सी प्लस ये हो जाएगा आई एक्स सी अपॉन ये हो जाएगा ए वाई सी, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, राइट। सो अगर मैं बात करूं, देखो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है सेंट्रॉइड, इस प्लेनर सरफेस का ये सेंट्रॉइड है, और ये सेंटर ऑफ प्रेशर है। तो अभी भी आपके पास आपका जो प्लेनर सरफेस है वो कैसा है, वो प्लेनर सरफेस आपके पास इंक्लाइंड है, राइट। तो आप सामने से देखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक लाइन दिखेगी, बट व्हेन यू सी फ्रॉम द साइड, जब आप साइड से देखोगे तो एक्चुअल इसका जो क्रॉस सेक्शन है, एक्चुअल क्रॉस सेक्शन इसका समझ में आएगा। आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास है। अब देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये देखो, ये आपका क्या है भाई, ये आपका है वाई सी, ये आपका क्या है, ये आपका है वाई सी, दिस इज द वाई सी, ये आपका वाई सी है। और वाई सी पी की अगर मैं बात करूं तो वाई सी पी क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक ये आपका वाई सी पी है, ये आपका वाई सी पी है। और यहीं पे आपका ऐड करने वाला है क्या, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स कैसा ऐड करेगा, नॉर्मल टू द सरफेस एंड कंप्रेसिव इन नेचर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस एंड ऑलवेज कंप्रेसिव इन नेचर। प्रेशर क्या होता है आपके पास, हमेशा कंप्रेसिव होता है। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स कैसा होगा, ऑलवेज कंप्रेसिव इन नेचर एंड नॉर्मल टू द सरफेस। क्लियर है क्या पॉइंट, इज इट क्लियर। बेटा यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं।
यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो भी यही है, वर्टिकल सरफेस है तो भी यही है। देखो अब इसका मैं डेरिवेशन तो अभी यहाँ पे नहीं करवाऊंगा, मैं आपको बस बता देता हूँ, ठीक है। आपके पास अगर एफ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप देख रहे हो, एफ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप देख रहे हो, तो आपके पास जो फॉर्मूला है ना, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स का जो फॉर्मूला है वो तीनों केस में ही सेम रहेगा। बट हाँ वाई सीपी आपके पास अलग अलग होगा। हॉरिजॉन्टल में वाई सीपी इज इक्वल टू वाई सी, वर्टिकल के केस में वाई सीपी इज इक्वल टू वाई सी प्लस आई एक्स सी प्लस ए वाई सी। मतलब यहां पे देखो वर्टिकल के केस में योर सेंटर ऑफ प्रेशर इज ऑलवेज बिलो द सेंट्रॉइड ऑफ द प्लेनर सरफेस। आपका जो सेंटर ऑफ प्रेशर है, आपका जो सेंटर ऑफ प्रेशर है, दिस इज ऑलवेज बिलो द सेंट्रॉइड ऑफ द प्लेनर सरफेस। वर्टिकल के केस में, वर्टिकल के केस में, तो वर्टिकल के केस में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो इस केस में प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन आपका कैसा बनता है दोस्त? इस केस में आपका जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा बनेगा? तो यहां पे तो आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। चलो ये हो गया, ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है, ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है, आप समझ रहे हैं। इस केस में अगर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो इस केस में आपके पास जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा? दिस इज द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। क्या मेरी बात समझ पाए हो? इज इट क्लियर और नॉट? टेल मी इज इट क्लियर और नॉट? अरे सब होगा, धीरे 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 सब क्वेश्चन होगा। सर सिंस वाटर इज नॉट प्रेजेंट अबव द बीसी, एग्जैक्टली सी इस केस में आप देखो, देखो यहाँ पे आपके पास इस पोर्शन के लिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूजिंग फॉर दिस पोर्शन, बीसी पोर्शन। सी बीसी पोर्शन अगर आप इसके ऊपर देखेंगे, इसके ऊपर तो वाटर प्रेजेंट नहीं है ना, द वाटर इज प्रेजेंट। गेट कैसा है आपके पास? देखो गेट एल शेप में है, एल शेप में, और यहाँ पे आपके पास क्या है? यहाँ पे आपके पास फ्लूइड है, ये आपके पास फ्लूइड है, और दिस इज ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं ना, दिस इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्री सरफेस। तो आपका फ्री सरफेस दोस्त ये है। और मैंने हमेशा आपको बताया है जब भी आप YC ले रहे हो या YCP ले रहे हो, YC ले रहे हो या YCP ले रहे हो, राइट, आप YC ले रहे हो या YCP ले रहे हो, उस केस में आपके पास क्या होगा? उस केस में आपके पास हमेशा डिस्टेंस, डिस्टेंस जो होता है वो कहां से होता है? दैट डिस्टेंस इज फ्रॉम द फ्री सरफेस। चलो मैं ना इसको ना क्वेश्चन के फॉर्म में आपको करवाऊंगा, मैं ऐसे नहीं करवा रहा हूं, आई विल डू इन द फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन। चलो मैं इसको ना क्वेश्चन के फॉर्म में करवाता हूं, मैं इसको क्वेश्चन के फॉर्म में करवाता हूं, जो भी कॉन्सेप्ट में है वो क्वेश्चन के फॉर्म में ही बताता हूं, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, चलिए इधर देखिए, एक काम करता हूं मैं यहां पे आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन दूं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए क्वेश्चन दूं, कर्व सरफेस का एक क्वेश्चन दूं, अच्छा वाला क्वेश्चन। चलो इधर देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से, ध्यान से, एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पे दे रहा हूं, तो ध्यान से थोड़ा सा। चलिए ये हो गया भाई आपके पास, दिस इज द सिलेंड्रिकल गेट, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास सिलेंड्रिकल गेट है, और दोस्त ये आपके पास क्या है? ये आपके पास, ये आपके पास है फ्री सरफेस, राइट। इस साइड पे आपके पास लिक्विड नंबर 1 है, लिक्विड नंबर 1 का फ्री सरफेस ये है, और इस साइड में आपके पास मैं बोल देता हूं, चलो ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास लिक्विड नंबर 2 है, और लिक्विड नंबर 2 का जो फ्री सरफेस है ये है आपके पास फ्री सरफेस, ठीक है। नौ से यहां से अगर आप देखोगे, देखिए ये हो गया आपके पास क्या? ये हो गया आपके पास सेंटर, है ना, ये हो गया आपके पास क्या? दिस इज द सेंटर, और ये है आपके पास सिलेंड्रिकल, दिस इज अ सिलेंड्रिकल गेट, राइट, ये सिलेंड्रिकल गेट है, और इस सिलेंड्रिकल गेट का जो रेडियस है वो R है, और लेंथ, लेंथ आपके पास L है, विच इज परपेंडिकुलर टू द मॉनिटर, मॉनिटर के परपेंडिकुलर लेंथ है L, राइट। इस साइड में आपके पास ये लिक्विड नंबर 1 है, मैंने बोला भाई ये लिक्विड नंबर 1 है, दिस इज द लिक्विड नंबर 1, दिस इज द लिक्विड नंबर 1, और इस केस में आप इस साइड में आपके पास क्या है? दिस इज द लिक्विड नंबर, दिस इज द लिक्विड नंबर 2, ये आपके पास लिक्विड नंबर 2 है, राइट। ये फ्री सरफेस है, ये फ्री सरफेस है लिक्विड नंबर 1 का, ये फ्री सरफेस है आपके पास लिक्विड नंबर 2 का, ठीक है। चलो मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है,
मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है नेट एफ एच, मुझे निकालना है नेट एफ एच, और मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है नेट एफ वी। और मैं एक चीज और आपको बता देता हूं, चलिए रो टू इज इक्वल टू, रो टू इज इक्वल टू, ये आपके पास है 2 टाइम्स ऑफ रो वन, ये भी मैंने आपको दे दिया है। रो टू इज इक्वल टू क्या दे दिया, रो टू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रो वन, ये मैंने दे दिया है। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है नेट एफ एच, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स और नेट वर्टिकल फोर्स निकालना है, ये 2 चीजें मुझे निकालनी है। ठीक है, ये मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में ही करवा रहा हूं, कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर रहा हूं बट क्वेश्चन के फॉर्म में ही कर रहा हूं। देखो तो ध्यान से सुनना, देखिए जब भी आपके पास, देखो भाई एक चीज समझना पहले, जब भी आप हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स का जब क्वेश्चन देखते हो, फर्स्ट आइडेंटिफाई दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द प्लेनर सरफेस और दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द कर्व सरफेस। ये आपके पास एक प्लेनर सरफेस का प्रॉब्लम है या फिर आपके पास कर्व सरफेस का प्रॉब्लम है। ठीक है, प्लेनर सरफेस मतलब समझ रहे हैं ना, प्लेनर सरफेस मतलब ये है, ये ऐसा आपको दिखेगा प्लेन, दिस इज द प्लेन। अब इसका शेप कुछ भी हो सकता है ना, क्रॉस सेक्शन तो कुछ भी हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, ट्रेपेजॉइडल हो सकता है, आपके पास रेक्टेंगुलर हो सकता है, आप समझ रहे हो ना। कर्व सरफेस मतलब आपके पास इस तरीके से कर्व्ड, ये आपके पास कर्व सरफेस है, दिस इज द कर्व सरफेस। सो सबसे पहले आप जब आपको क्वेश्चन मिलता है ना, तो आइडेंटिफाई कर लो वो किसका क्वेश्चन है। अब देखो, अब आपके पास ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके पास एक सिलेंड्रिकल गेट है एंड सिलेंड्रिकल गेट इज इन कांटेक्ट विद द 2 लिक्विड्स, दिस इज द लिक्विड नंबर 1, दिस इज द लिक्विड नंबर 2। रेडियस आपके पास r है, परपेंडिकुलर टू द मॉनिटर, मॉनिटर के परपेंडिकुलर आपके पास लेंथ l है। अब इसमें मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एफ एच। तो एक काम कर सकते हो, सबसे पहले ना ये जो सिलेंडर है, ये जो सिलेंडर है ना, इस सिलेंडर को आप बांट लीजिए। ये हो गया यार दोस्त आपका ए, इसको मैं मान लेता हूं क्या, ये हो गया बी, और इसको मैं मान लेता हूं क्या, ये हो गया आपके पास सी, राइट। ये हो गया ए और ये हो गया बी और ये हो गया सी। मतलब यहां से ये समझ में आ रहा है दैट AB portion is in contact with the liquid number 1 and the BC portion is in contact with the liquid number 2। अब समझ रहे हो। अब देखो, अब आपके पास अगर AB पोर्शन है, इस AB पोर्शन में अगर मुझे निकालना होगा, पहले तो मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालता हूं। अब देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं, जब भी आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना है, कंसीडर अ इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन, कंसीडर अ इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन। अब देखो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एक इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन में क्या करने वाला हूं, एक इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन कंसीडर करता हूं। तो ये मैंने एक इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन कंसीडर किया, और इस इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन में इस पॉइंट को, ए बी पॉइंट को मैं क्या करूंगा, ए बी पॉइंट को मैं प्रोजेक्ट करता हूं। तो ए का जो प्रोजेक्शन होगा ना, ए को प्रोजेक्ट करोगे तो ए का प्रोजेक्शन आ जाएगा यहाँ पे ए डैश, और बी को जब प्रोजेक्ट करोगे ना तो बी का प्रोजेक्शन आ जाएगा यहाँ पे बी डैश, है ना। ए का जो प्रोजेक्शन आ जाएगा, ए का प्रोजेक्शन आ जाएगा ए डैश, और बी का जो प्रोजेक्शन होगा ना, बी का प्रोजेक्शन आ जाएगा आपके पास, ए को प्रोजेक्ट करो तो ए का जो प्रोजेक्शन होगा, दूसरा कलर ले लेता हूं मैं, ए का जो प्रोजेक्शन होगा, ए का प्रोजेक्शन हो जाएगा ये हो गया ए डैश, और बी का जो प्रोजेक्शन होगा ना, बी का प्रोजेक्शन हो जाएगा ये हो गया बी डैश। ठीक है भाई, ये हो गया ए का प्रोजेक्शन ए डैश, और ये हो गया बी का प्रोजेक्शन, ये हो गया बी डैश, करेक्ट। और ये मेरा क्या है, ये मेरा है इमेजिनरी, दिस इज द इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन, दिस इज द इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन, दिस इज द इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन, ये इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन है, राइट। अब इस केस में अगर मुझे निकालना है, क्या निकालना है मुझे निकालना है एफ एच। तो एफ एच निकालना पड़ेगा, तो एफ एच निकालने के लिए मैंने क्या किया, इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन लिया, इसमें प्रोजेक्ट करेंगे, तो प्रोजेक्ट करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, अगर आप प्रोजेक्ट करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको कुछ ऐसा एक प्लेनर सरफेस मिलेगा, ये आपको प्लेनर सरफेस मिलेगा। और ये जो प्लेनर सरफेस आपको मिल रहा है ना, ये जो प्लेनर सरफेस मिल रहा है, अब इसमें कैलकुलेशन पूरा एक वर्टिकल प्लेनर सरफेस की तरह होने वाला है, राइट। तो अब यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब ये बताओ एफ एच, क्योंकि अगर मुझे एफ एच नेट निकालना है, अगर मुझे एफ एच नेट निकालना है, अगर मुझे एफ एच नेट निकालना है, तो ये हो गया दोस्त एफ एच, ये हो जाएगा ए बी में, एफ एच ए बी में, और ये हो जाएगा दोस्त एफ एच, ये हो जाएगा सी डी में, विथ प्रॉपर साइन लेना है, एफ एच ए बी में प्लस एफ एच सी डी में। नेट एफ एच जीरो नहीं होगा, नेट एफ एच जीरो नहीं होगा, यहां पे सिमेट्रिकल कंडीशन नहीं है, नेट एफ एच जीरो नहीं होगा, एफ एच जीरो नहीं होगा, राइट। अरे कैसे जीरो हो जाएगा, देखो ना सिमेट्रिक थोड़ी है, यहां तक आपके पास लिक्विड नंबर 1 है, इधर लिक्विड नंबर 2 है, लिक्विड नंबर 2 में बीसी पोर्शन कांटेक्ट में, लिक्विड नंबर 1 में एबी पोर्शन कांटेक्ट में है, कैसे आपका एफ एच जीरो हो जाएगा। तो जो नेट एफ एच जीरो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं भैया, नेट एफ एच जीरो नहीं होगा। अब देखो एफ एच ए बी, सो एफ एच ए बी अगर आप निकालोगे ना, सो दिस इज इक्वल टू, देखो इसमें निकालना है आपको, सो एफ एच ए बी अगर आप निकालेंगे तो दोस्त ये हो जाएगा रो 1,
ठीक है, इसको लिक्विड नंबर 1 बोला था, रो 1 इंटू जी, मतलब रो इंटू जी इंटू एरिया। तो एरिया किसका एरिया लेंगे, इस प्रोजेक्शन का एरिया लेंगे, और इस प्रोजेक्शन का एरिया अगर आप देखोगे, चलिए परपेंडिकुलर टू द मॉनिटर, मॉनिटर के परपेंडिकुलर आपके पास लेंथ आपके पास दिया है विच इज एल, ये हो जाएगा एल, और ये हो जाएगा आपके पास कितना आर प्लस आर, ये हो जाएगा दोस्त 2r। तो व्हाट इज द एरिया, एरिया हो जाएगा दिस 2r इंटू एल, 2r इंटू एल इंटू वाई सी कितना हो जाएगा भाई, ये वाई सी आपका देखो यहां से अगर आप देखेंगे, चलिए ये आपका क्या है, देखो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वाई सी, दिस इज द वाई सी, और ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू आर, दिस इज इक्वल टू आर, तो ये हो जाएगा आपके पास आर के इक्वल। क्या बात समझ में आ रही है क्या, क्या बात समझ में आ रही है क्या। तो यहां से अगर आप देखोगे तो एफ एच ए बी ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है, रो 1 इंटू जी, रो 1 इंटू जी इंटू ये हो जाएगा 2r², दिस इज 2, ये हो गया r² इंटू एल, ये आ जाएगा। चेक करना क्या यही आ रहा है क्या सबका, प्लीज चेक करेंगे क्या यही आ रहा है क्या सबका, दोस्त चेक कर लेना क्या यही आ रहा है क्या एफ एच ए बी। अगर एफ एच ए बी ए आ रहा है, अब आप निकालो एफ बी सी, एफ एच बी सी, तो एफ एच बी सी निकालेंगे, एफ एच बी सी निकालेंगे, तो इसमें भी हम वही लिखेंगे, बस इसमें रो 2 जी इंटू ए इंटू वाई सी। अच्छा अब देखो इस केस में ये रो 2 इंटू जी इंटू एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा, अब इसको आप प्रोजेक्ट करो, सेम चीज सेम लॉजिक अप्लाई करना है, सेम लॉजिक अप्लाई करना है, सेम लॉजिक यहां पे अप्लाई करना है, राइट, सेम लॉजिक यहां पे अप्लाई करना है। क्या लॉजिक आपको अप्लाई करना है, यहां पे आपको लेना है क्या, आपको लेना है एक इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन, सो दिस इज द इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन, ठीक, ये हो गया। प्रोजेक्ट करोगे तो प्रोजेक्शन क्या आएगा दोस्त, प्रोजेक्शन आएगा आपके पास रेक्टेंगल, सबको पता है प्रोजेक्शन कैसा आएगा, प्रोजेक्शन आएगा रेक्टेंगल, ये हो गया रेक्टेंगल। यार ये डायमेंशन कितना हो जाएगा, ये डायमेंशन हो गया आपके पास, ये हो गया आर, दिस इज द आर, ये आपका क्या हो जाएगा एल। आप समझ रहे हो मेरी बात, ये आर हो गया, ये एल हो गया। तो अब अगर मैं यहां पे बोलूं आपके पास एरिया क्या हो गया, देखो एरिया क्या हो गया, एरिया, एरिया क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू, सॉरी, हाँ एरिया हो जाएगा आपके पास आर इंटू एल इंटू, अच्छा वाई सी कितना हो जाएगा, अब देखो इस केस में वाई सी कितना होगा, तो ये जो आपके पास बीसी सरफेस है ये लिक्विड नंबर 2 के कांटेक्ट में है, और लिक्विड नंबर 2 के लिए फ्री सरफेस ये है, आप समझ रहे हो, लिक्विड नंबर 2 के लिए फ्री सरफेस ये है, राइट ना। सही, अब यहां पे अगर आप देखोगे, अब यहां पे अगर आप देखोगे तो इस केस में आपके पास जो वाई सी होगा यहां कहीं पे होगा ना, ये हो गया, मतलब ये हो जाएगा दोस्त r/2, ये हो जाएगा r/2, और ये आपके पास है सेंट्रॉइड इस प्लेनर सरफेस का, तो r/2, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, ये हो जाएगा r/2। आई होप आप समझ पा रहे होगे, दिस इज द r/2, राइट, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास रो 2 इंटू जी इंटू ये हो जाएगा r² इंटू l/2, ये हो गया। अब हमें निकालना है क्या, अब हमें निकालना है एफ एच नेट निकालना है। अब देखो आपका जो एफ एच, इधर ध्यान से सुनना, आपका जो एफ ए बी होगा वो कैसा लगेगा, आपका जो एफ ए बी है वो कैसा लगेगा, तो एफ ए बी कैसा लगेगा, तो इस पोर्शन में देखो यहां पे अगर आप देखोगे प्लेनर सरफेस पे, तो सेंटर ऑफ प्रेशर यहां कहीं पे होगा, नीचे ही होगा ना, सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा, नीचे ही होगा ना, सेंटर ऑफ प्रेशर यहां पे होगा, बट इसको एक्चुअल में कर्व सरफेस में दिखाना है तो यहां पे काम करना है, ये जो लाइन ऑफ एक्शन है ना, इस लाइन ऑफ एक्शन को इधर ले जाना, देखो ये हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एच, ये हो गया आपके पास ए बी, और इधर अगर आप देखोगे तो यहां पे होगा आपके पास क्या, सेंटर ऑफ प्रेशर, राइट। अब इसमें सेंटर ऑफ प्रेशर अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये तो इधर एक करेगा, बट आपको कर्व सरफेस पे दिखाना है, तो कर्व सरफेस पे दिखाना है तो ये हो जाएगा आपके पास एफ एच, ये हो गया आपके पास क्या, ये हो गया बीसी, राइट, दिस इज द एफ एच ए बी एंड दिस इज द एफ एच बी सी। बोलो समझ में आया क्या, क्या यहां तक बात क्लियर है क्या, मुझे जल्दी बता देना क्या ये बात क्लियर है क्या। अब देखो अब आपके पास क्या दिख रहा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है ना, एफ एच ए बी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा 2 एफ एच ए बी प्लस ये हो गया एफ एच, ये हो गया बी सी, राइट, ये हो जाएगा आपके पास रो 1 इंटू जी इंटू रो 1 इंटू जी इंटू, या ठीक है रो 1 इंटू जी इंटू r² एल, ये हो जाएगा r² इंटू एल, और ये हो गया 2, और ये हो जाएगा माइनस,
राइट, ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास रो टू इंटू ये हो गया जी और ये हो गया आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, ये हो जाएगा 2। ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया है, थोड़ा सा आपको लंबा लग रहा होगा, बट ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस के लिए बताया है, दैट्स इट। राइट, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट समझाता तो शायद उस पर आप बोर हो जाते, बट इसीलिए मैंने इसको कॉन्सेप्ट के फॉर्म में बताया है। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, देखो यार, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2 रो 1, आई एम सॉरी दिस इज रो 2 ना, दिस इज रो टू जी आर स्क्वायर एल, और आपका रो 2 जो है वो 2 टाइम्स ऑफ रो 1 था। ये आपके पास क्या था, ये आपके पास था 2 टाइम्स ऑफ रो 1, ये था 2 टाइम्स ऑफ रो 1, तो ये 2 और ये 2 आपके पास चला गया, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास रो 1, ये हो जाएगा जी और ये हो गया आर स्क्वायर, ये हो गया एल, दिस इज द एफ एच नेट, ये आपका एफ एच नेट है। क्या यही आ रहा है क्या सबका, चेक कर लेना यार, क्या यही आ रहा है क्या एफ एच नेट सबका। सर नेट में ऐड कैसे होगा, नेट में ऐड कैसे होगा, अरे मैं बताया तो, विथ प्रॉपर साइन ना, मैं यहाँ पे वेक्टर योल, मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ देखो, डायरेक्शन मैंने यहाँ पे अभी कंसीडर नहीं किया है, अब मैं जब डायरेक्शन कंसीडर करूंगा तो इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस लिखा है। आवाज धीरे आ रही है थोड़ी, अब बाकी लोगों की भी आवाज धीरे आ रही है क्या, चलो अब बताओ, अब मुझे निकालना है क्या, मुझे निकालना है एफ वी सी, अब मुझे निकालना है क्या, अब मुझे सॉरी, अब मुझे निकालना है एफ वी, नेट एफ वी, तो नेट एफ वी कैसे निकालेंगे, नेट एफ वी कैसे निकालेंगे, नेट एफ वी, नेट एफ वी कैसे निकालेंगे, नेट एफ वी, तो सेम चीज यही, ये आपके पास हो गया एफ वी ए बी में प्लस ये हो जाएगा एफ वी, ये हो गया बी सी में, एफ वी ए बी में प्लस एफ वी बी सी में। अरे बेटा कैसे कैंसिल हो जाएंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है संगम, कैसे कैंसिल हो जाएंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, देखो दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, दोनों का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग है, अरे दोनों का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग है, दोनों का आपके पास मैग्नीट्यूड अलग अलग है, कैसे कैंसिल हो जाएगा, सिमेट्रिक कंडीशन नहीं है ये। आप देखो ना, इधर आपके पास लिक्विड नंबर 1 के कांटेक्ट में है, इधर लिक्विड नंबर 2 के कांटेक्ट में है, इसमें ए बी पोर्शन है, इसमें बी सी पोर्शन है, कैसे कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट कब होता है, जब आपके पास सिमेट्रिक कंडीशन होती है, इधर भी सेम लिक्विड, इधर भी सेम लिक्विड, ठीक है, इधर भी आपके पास ए बी पोर्शन कांटेक्ट में है और इधर आपके पास पूरा का पूरा बी ए पोर्शन कांटेक्ट में है, सिमेट्रिक केस। अगर ऐसा होता भाई, अगर आपके पास ऐसा होता, ये आपका क्या हो गया, चलो ये हो गया फ्री सरफेस, ये आपके पास फ्री सरफेस है, अगर ऐसा होता और मैं आपसे पूछता बताओ इस केस में नेट एफएच कितना होगा, राइट, अगर मैं इस केस में आपसे पूछता कि बताओ नेट एफएच इसमें कितना होगा, तो यस इसमें नेट एफएच 0 होगा, बट इसमें नहीं होगा दोस्त, ठीक है। चलो इधर आप मुझे बता दो, पहले तो मुझे बता दो ए बी पोर्शन में, मुझे तो बता दो ए बी पोर्शन में, ए बी पोर्शन में कैसे निकालेंगे, ए बी पोर्शन में ये निकाला हुआ है आपने, कल की क्लास में आपने ए बी पोर्शन इस तरीके का क्वेश्चन आपने किया हुआ है जहां तक मुझे याद आ रहा है। चलो इधर देखो, ये हो गया आपके पास क्या, ये हो गया आपके पास, देखो भाई ये हो गया फ्री सरफेस, सॉरी कलर चेंज कर देता हूं, ये हो गया आपके पास क्या, ये हो गया आपके पास फ्री सरफेस, ठीक है, दिस इज द फ्री सरफेस, ये फ्री सरफेस है, और यार ये हो गया आपके पास क्या, ये हो गया आपके पास ए बी, ये ए था, पहले मैं सिर्फ ए बी पोर्शन में आपको दिखा रहा हूं, ये बी था, ठीक है। अब कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताओ, कैसे करेंगे, वर्टिकल के लिए क्या करते हैं, वर्टिकल के लिए क्या करते हैं, वर्टिकल के लिए, वर्टिकल के लिए क्या करते हैं, एक इमेजिनरी क्या लेते हैं, इमेजिनरी, वर्टिकल के लिए क्या करेंगे, वर्टिकल के लिए, वर्टिकल के लिए मैं क्या करता हूं, वर्टिकल के लिए मैं एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल प्लेन लूंगा जो कोइंसाइड करेगा किसको, फ्री सरफेस को, तो ये मेरे पास क्या है, दिस इज द इमेजिनरी
दिस इज द इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस इज द इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल प्लेन। किसको कोइंसाइड कर रहा है? फ्री सरफेस को कोइंसाइड कर रहा है। अब देखो, अब आपको प्रोजेक्ट करना है, तो ए को प्रोजेक्ट करो। तो ए का जो प्रोजेक्शन होगा ना, देखो ए को प्रोजेक्ट कर रहा हूं, ए का प्रोजेक्शन तो यार यहीं पे आने वाला है, ये हो गया ए डैश। अब पूरा का पूरा घूमते हुए बी तक जाना है, तो पूरा का पूरा घूमते हुए बी तक चलो, ऐसे चलो, कर्व सरफेस के लॉन्ग घूमते हुए बी तक चलो, ये बी पे आ गए। अब बी को प्रोजेक्ट करो, तो बी का जो प्रोजेक्शन होगा, देखो बी का प्रोजेक्शन कैसा होगा, बी का प्रोजेक्शन ये होगा, ठीक है। ये हो गया आपके पास क्या, ये हो गया आपके पास बी डैश, ठीक। तो अब देखो, अब ये जो आपको, ये जो वॉल्यूम आपको मिलेगा ना, ये जो वॉल्यूम मिलेगा, ये वाला वॉल्यूम दिख रहा होगा सबको, ये शेडेड वॉल्यूम। इस शेडेड वॉल्यूम में जो लिक्विड का वेट होगा, इस शेडेड वॉल्यूम में जो लिक्विड का वेट होगा, वही आपके पास ए बी में आपके पास वर्टिकल फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। अब आप ये चीज भी बोल सकते हैं, अरे सर इस साइड इसमें तो लिक्विड है ही नहीं, सर लिक्विड तो इस साइड में है, लिक्विड तो इस साइड में है, तो यहां पे हम क्या भरे बोलेंगे कि यहां पे हमारे पास इमेजिनरी लिक्विड है। कौन सा लिक्विड है? इमेजिनरी लिक्विड है। और इमेजिनरी लिक्विड कौन सा वाला? रो 1 वाला या रो 2 वाला? इमेजिनरी लिक्विड कौन सा वाला? रो 1 वाला या रो 2 वाला? कौन सा बताओ? रो 1 वाला या रो 2 वाला? बोलो 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 बोलो। अरे सर जिस वो वाला लिक्विड जो ए बी सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, और ए बी सरफेस के साथ कांटेक्ट में होने वाला जो लिक्विड है, ये है लिक्विड नंबर 1, जिसकी डेंसिटी आपने बोली हुई है रो 1 है। क्या बात समझ पा रहे हो? ठीक है। तो यहां से अगर मैं बोलूं एफ वी ए बी, अगर आप बोलूंगा एफ वी ए बी, तो दिस एफ वी ए बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास वेट ऑफ द लिक्विड, ये हो जाएगा आपके पास वेट ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ द लिक्विड इन शेडेड वॉल्यूम, इन शेडेड वॉल्यूम। कौन सा शेडेड वॉल्यूम? ए बी, बी डैश, ए डैश, ए, ये शेडेड वॉल्यूम है, ये शेडेड वॉल्यूम है। तो अब बता दो यहां से क्या हो जाएगा, वेट कैसे निकालते हैं? तो ये हो गया रो 1 इंटू जी इंटू, बताओ भाई वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम? शेडेड वॉल्यूम यार, कौन सा वॉल्यूम? शेडेड वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम? शेडेड वॉल्यूम। अब मुझे बताओ, ये हो गया रो 1 इंटू जी इंटू, बताओ शेडेड वॉल्यूम क्या है? बताओ शेडेड वॉल्यूम क्या है? भाई ये सिलेंड्रिकल था ना, तो सेमी सिलेंड्रिकल आ गया, तो सेमी सिलेंड्रिकल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास दिस इज द पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एल। तो यहां से आ जाएगा दिस इज द, ये आपको दिख रहा है वर्टिकल फोर्स है ए बी पोर्शन में, ठीक है। तो ये हो जाएगा रो 1 जी, और ये हो गया पाई, ये हो गया आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई दिस इज बाई 2, ये हो गया। बोलो समझ में आ गया? दिस इज एफ वी ए बी। बट सर अभी एफ वी बी सी भी बचा हुआ है ना, एफ वी आपके पास बी सी भी बचा हुआ है। तो देखो भाई एफ वी बी सी कैसे निकालेंगे, एफ वी बी सी कैसे निकालेंगे? देखो यहां पे ये हो गया, ये आपके पास, अब देखो ये ए था, ये बी था, अब हमें फोकस करना है बी सी वाले पे, ये हो गया, ठीक। इसके लिए आपके पास क्या था? इसके लिए आपके पास था, देखो दिस इज द लिक्विड नंबर 2, ये लिक्विड नंबर 2 का फ्री सरफेस है, ये लिक्विड नंबर 2 का फ्री सरफेस है, दिस इज द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड नंबर 2, राइट। ये आपके पास है लिक्विड नंबर 2। अब क्या करना है यहां पे भी, यहां पे सेम लॉजिक यूज करना है। क्या यूज करना है? एक क्या लेना है आपको? आपको लेना है इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल प्लेन विच कोइंसाइड्स विद द फ्री सरफेस। 2r आएगा, क्यों 2r आएगा? 2r क्यों आएगा? अरे 2r क्यों आएगा दोस्त? 2r क्यों आएगा? ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ये सेमी सिलेंडर, सेमी सर्कल, पाई आर स्क्वायर बाई 2, 2r क्यों आएगा दोस्त? मनीष 2r क्यों आएगा? अच्छा अब देखो, अब आपको बीसी पोर्शन में निकालना है ना, तो बीसी पोर्शन में निकालने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, मैं लेने वाला हूं एक, देखो इधर ध्यान से, ये हो गया मेरा इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल प्लेन विच कोइंसाइड्स विद द फ्री सरफेस। दिस इज द इमेजिनरी वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल प्लेन कोइंसाइड्स विद द फ्री सरफेस, हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब देखो, अब मैं क्या करने वाला हूं, अब ए को प्रोजेक्ट करता हूं, देखो यहां पे इस इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इस इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल प्लेन में मैं प्रोजेक्ट करेगा, किसको प्रोजेक्ट करेगा? मैं प्रोजेक्ट करेगा सी को, देखो इधर। तो सी का प्रोजेक्शन तो यार यहीं पे आएगा, सी का प्रोजेक्शन तो यहीं पे आएगा, ये हो गया सी डैश।
अब मैं प्रोजेक्ट करता हूं किसको, अब मैं प्रोजेक्ट करता हूं, ठीक है, बी को। तो बी का जो प्रोजेक्शन होगा, बी का प्रोजेक्शन आएगा, ये हो गया, देखो ये हो गया तुम्हारा क्या, ये हो गया तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, ये हो गया तुम्हारे पास बी डैश। मतलब देखो ए को सी को प्रोजेक्ट किया, सी डैश पूरा का पूरा घूमते हुए आया, मैं कहां तक घूमते हुए आया बी तक, फिर बी को प्रोजेक्ट किया, तो बी को प्रोजेक्ट किया तो क्या मुझे ये वाला वॉल्यूम मिल रहा है क्या, देखो इधर, क्या मुझे ये वाला वॉल्यूम मिल रहा है क्या। अब ये वाला जो वॉल्यूम मिल रहा है, ये वाला जो वॉल्यूम मिल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ये वाला जो वॉल्यूम मिल रहा है, ये वाला जो वॉल्यूम मिल रहा है, यहां पे भी आप बोलोगे सर यहां पे तो लिक्विड है नहीं, तो यहां पे फिर मैं क्या मानूंगा, यहां पे मैं मानूंगा ये मेरे पास क्या है, दिस इज द इमेजिनरी लिक्विड, ये मेरे पास क्या है, दिस इज द इमेजिनरी लिक्विड। और कौन सा लिक्विड, कौन सा लिक्विड, बोलो कौन सा लिक्विड, लिक्विड नंबर 2, लिक्विड नंबर 2, क्योंकि बीसी पोर्शन कॉन्टेक्ट में लिक्विड नंबर 2 के, लिक्विड नंबर 2 के। तो अब आप मुझे यहां से बता दो दोस्त कि आपका, पहले तो मैग्नीट्यूड निकाल लो, डायरेक्शन वायरेक्शन बाद में बात कर लेंगे, एफ वी ए बी बताओ, देखो इधर एफ वी ए बी, तो यार ये हो जाएगा तुम्हारे पास वेट ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड इन shaded volume, in shaded volume, right, in shaded volume, ये हो जाएगा तुम्हारे पास B C डैश C B डैश और ये हो गया B, एंड दिस इज इक्वल टू, ये हो गया रो 2 मल्टीप्लाइड बाई G इनटू वॉल्यूम। बताओ वॉल्यूम कितना होगा इसका, अरे बोलो भाई वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4, पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू एल, पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू एल, क्या यही होगा क्या, क्या यही होगा क्या, बोलो भाई, है ना। अब रो 2 तो आपके पास, रो 2 तो आपके पास 2 टाइम्स ऑफ रो 1 था, रो 2 तो आपके पास 2 टाइम्स ऑफ रो 1 था, बोलो था कि नहीं था, लिखा था हमने, रो 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रो 1, रो 2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास था रो 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रो 1, ये दिया था क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में दिया था, ये मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूं, इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, राइट। तो यहां से आप लिख सकते हैं ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रो 1 इंटू जी इंटू ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू ये हो गया एल, ये हो जाएगा, है ना। तो ये आपके पास 2 से ये हो गया 2, तो यार ये हो जाएगा तुम्हारे पास रो 1g डिवाइडेड बाई रो 1g या पाई रो 1g, पाई रो 1g, ये हो गया आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई 2। चलो मैग्नीट्यूड निकल गया, मैग्नीट्यूड तो आपने निकाल लिया, क्या मैग्नीट्यूड निकालने में अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट है, क्या मैग्नीट्यूड निकालने में अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट है, मैग्नीट्यूड निकालने में, मैग्नीट्यूड निकालने में क्या अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट है, मैग्नीट्यूड निकालने में नहीं है डाउट। अब बात करते हैं डायरेक्शन की, अब हम बात करेंगे डायरेक्शन, क्योंकि अल्टीमेटली हमें निकालना है क्या, अल्टीमेटली हमें निकालना है एफ वी, एफ नेट एफ वी निकालना है ना, नेट एफ वी निकालना है। अब आपको बताना पड़ेगा, बोलो भाई ये यहां पे जो आप देख रहे हैं, क्या ये आप देख रहे हैं एफ वी ए बी, इस एफ वी ए बी का डायरेक्शन कैसे होगा, इस एफ वी ए बी का डायरेक्शन कैसे होगा, बताइए इस एफ वी ए बी का डायरेक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो वर्टिकल फोर्स जो होगा, वर्टिकल फोर्स जो होगा वो कहां पे एक्ट करेगा, ये जो वर्टिकल फोर्स है ये कहां पे एक्ट करेगा, ये एक्ट करता है, ये जो शेडेड वॉल्यूम आप देख रहे हो ना, ये जो शेडेड वॉल्यूम आप देख रहे हो, इस शेडेड वॉल्यूम के सेंट्रॉइड पे, कहां पे एक्ट करेगा, शेडेड वॉल्यूम के सेंट्रॉइड पे एक्ट करता है, ये आपका क्या, ये आपका एफ वी ए बी। तो शेडेड वॉल्यूम का सेंट्रॉइड, तो शेडेड वॉल्यूम का सेंट्रॉइड अगर आप देखेंगे तो भाई इसका क्या सेंट्रॉइड लोकेट करना आता है क्या, हाँ सर आ जाएगा सेंट्रॉइड लोकेट करना, ठीक है। इसका जो सेंट्रॉइड होगा, देखो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन का जो सेंट्रॉइड होगा दैट इज समवेयर हियर, देखिए ये जो आपके पास होगा इसका जो सेंट्रॉइड होगा, इधर समझेंगे सेंट्रॉइड होगा, तो ये वाले पोर्शन का हमको सेंट्रॉइड निकालना है ना, तो दैट इज समवेयर हियर, ये हो जाएगा, राइट, ये हो जाएगा यहाँ कहीं पे सेंट्रॉइड। और ये डिस्टेंस कितना होता है 4r/3π, ये मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा, सेंट्रॉइड लोकेट करना आपने पढ़ा होगा, मैं यहाँ पे आपको सेंट्रॉइड लोकेट करना नहीं सिखा रहा हूँ, है ना। ये डिस्टेंस आपका कितना होता है, ये डिस्टेंस आपका होगा 4r/3π। ये जो आप दिख रहा है, ये पोर्शन जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है, दिस इज सिमेट्रिक अबाउट दिस एक्सिस, ये सिमेट्रिक है इस एक्सिस के अबाउट, आप देख रहे हैं ना, ये जो शेडेड पोर्शन है, दिस शेडेड पोर्शन इज सिमेट्रिक अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, और इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब सेंट्रॉइड यहीं कहीं पे होगा, यहाँ 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 पे होगा, कहाँ पे होगा, तो एग्जैक्टली आपके पास कहाँ पे होगा, दिस इज 4r/3π, बिल्कुल सही बोला, 4r/3π, एम कार बिल्कुल सही है ना, 4r/3π। अब देखो, अब यहाँ पे आपके पास ये हो गया,
आपके पास एफ वी, ये हो गया आपके पास ए बी, एफ वी ए बी। अब करना क्या है दोस्त, लेकिन इधर तो आप बोलेंगे सर इधर तो इमेजिनरी लिक्विड था, हमारे पास एक्चुअल में जो लिक्विड है वो तो इस साइड पे है। तो करना कुछ नहीं है, आपको इस एफ वी ए बी के लाइन ऑफ एक्शन को आप नीचे की तरफ ले आओ। ये जो आप देख रहे हैं ना एफ वी ए बी, ये जो आप देख रहे हो ना एफ वी ए बी, इस एफ वी ए बी के लाइन ऑफ एक्शन को आप नीचे की तरफ ले आओ, बस लाइन ऑफ एक्शन को नीचे की तरफ ले आओ। ये हो गया इसका लाइन ऑफ एक्शन, ये हो गया इसका लाइन ऑफ एक्शन, इसको नीचे की तरफ ले आओ। और नीचे की तरफ अगर ले आए, इसके लाइन ऑफ एक्शन को नीचे की तरफ ले आए, तो एक्चुअल में जो एफ वी ए बी जो लग रहा होगा, एफ वी ए बी जो लग रहा होगा इस कर्व सरफेस पे कैसा लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा। दिस इज द एफ वी ए बी। मतलब एफ वी ए बी कैसा लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है। एफ वी ए बी कैसा लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है। एंड सिमिलरली आप कमेंट कर सकते हो, सिमिलरली आप कमेंट कर सकते हो कि यहां पे देखो इस पोर्शन में कैसा लग रहा होगा। तो इस पोर्शन में आप देखो सेंट्रॉइड कहां पे होगा दोस्त, सेंट्रॉइड इस केस पे, ठीक है, यहां कहीं पे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी ये भी 4r/3 होगा, है ना। और यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी आपके पास 4r/3 होगा, ठीक है क्या। अब देखो, अब यहां पे अगर आप देखोगे, इधर देखो, सेंट्रॉइड ये हो गया और ये हो गया आपका एफ वी, क्या हो गया भाई, ये हो गया एफ वी ए बी, ये है एफ वी ए बी, एफ वी ए बी। इसके लाइन ऑफ एक्शन को नीचे ले आओ, लाइन ऑफ एक्शन को नीचे लाओगे, ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन, ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन, इसको नीचे ले आए, लाइन ऑफ एक्शन को आप नीचे ले आएंगे, लाइन ऑफ एक्शन को आप नीचे ले आएंगे, तो एक्चुअल में कैसा लगेगा, एक्चुअल में लग रहा है ये हो गया आपका एफ वी, ये हो गया ए बी, एफ वी ए बी, एक्चुअल में ऐसा लगेगा। तो एफ वी, आप मुझे बताओ, अगर आपको नेट निकालना है ना दोस्त, आपको नेट निकालना है, आपको नेट निकालना था, तो यार ये भी ऊपर की तरफ लग रहा है और ये भी ऊपर की तरफ लग रहा है, दोनों ही ऊपर की तरफ लग रहा है, तो दोनों ही अगर ऊपर की तरफ लग रहा है तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू, अब आप लिख सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं एफ वी ए बी कितना होगा, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द एफ वी ए बी, क्या आप, सॉरी व्हाट इज द एफ वी नेट, आपसे अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द एफ वी नेट, सो कैन वी टेल मी व्हाट इज द एफ वी नेट, है ना। तो आपका जो एफ वी ए बी में आपने निकाला था ये भी ऊपर लग रहा है, और आपका जो एफ ए बी सी में आपने निकाला ये भी ऊपर लग रहा है, दोनों ऊपर लग रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये ऐड हो जाएगा, ये बिल्कुल सही बात है, ये ऐड हो जाएगा। तो आप मुझे एक बार बता देंगे, ये ρ1g πr²L/2, ये है आपके पास ρ1g πr²L/2 प्लस, राइट, एफ वी बी सी, एफ वी बी, अच्छा यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलती किया था, एफ वी ये बी सी होगा, सॉरी ये बी सी होगा दोस्त, ये हो गया बी सी, है ना, एफ वी बी सी। और ये हो गया, ये भी आपके पास है πr1², ये हो गया आपके पास πr², πr², पाई ρ1g, अच्छा यहाँ पे 2 मिसिंग है ना, हाँ स्क्वायर मिसिंग है, तो ये हो जाएगा आपके पास πr² ρ1gl, ये हो जाएगा ρ1gl/2। क्या सभी का ये आ रहा है क्या, क्या सब ये सही है क्या, एक बार कंफर्म कर लेना है, क्या ये सही है क्या, क्या मैंने सही लिखा है क्या। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ρ1g, ये हो जाएगा πr²L, ये आ रहा है आपके पास, दिस इज द एफ वी नेट, ये आ गया आपके पास एफ वी नेट, ठीक है। और डायरेक्शन कैसा होगा, डायरेक्शन अपवर्ड ही होगा, डायरेक्शन कैसा होगा, डायरेक्शन आपके पास अपवर्ड भी होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन, सबको क्लियर है। बता दीजिए जल्दी से, क्या सबको क्लियर है। चलो, सो कर्व सरफेस के क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आए हुए हैं, आगे भी एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
इन गेट क्वेश्चन वेयर विल बी द सेंटर ऑफ प्रेशर बी फॉर बीसी। बताया तो बीसी के लिए कहाँ पे होगा, बताया तो था अभी, वही चीज तो मैंने बताया। बीसी के लिए कहाँ पे होगा बताया तो, अरे बताया तो दोस्त, कैसे कर रहे हो, बताया तो यहाँ पे, ये तो बताया था। ये 4r/3 होगा, ये 4r/3 होगा, बताया तो था मैंने। ओके, सो ये क्वेश्चन आपके पास है, u इज इक्वल टू, इसमें द हाइड्रोडाइनमिक बाउंड्री लेयर और अ फ्लैट प्लेट इज शोन इन द फिगर बिलो, द वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन इज अप्रोक्सीमेटेड एज u इज इक्वल टू a प्लस बी वाई प्लस सी वाई स्क्वायर। मतलब यहाँ पे जो बाउंड्री लेयर के अंदर है ना, बाउंड्री लेयर के अंदर जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो आपके पास पैराबोलिक सेकेंड डिग्री पैराबोला वेलोसिटी प्रोफाइल है, a प्लस बी वाई प्लस सी वाई स्क्वायर, वेयर a b c आर दी कांस्टेंट, u इज द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, डेल्टा इज द बाउंड्री लेयर थिकनेस एट एनी पॉइंट ऑन द प्लेट। राइट, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में आपके पास, आपको डायरेक्टली एंड रिजल्ट याद है तो भी बहुत अच्छी बात है, बट कई बार आपसे बाउंड्री कंडीशन पूछ लेता है ना। मतलब आपके पास क्या पूछ लेते हैं कि भाई देखो ए बी सी, आपके पास यहाँ पे 3 कांस्टेंट दिख रहा है और 3 कांस्टेंट आपके पास दिख रहा है, 3 कांस्टेंट को निकालने के लिए आपको 3 बाउंड्री कंडीशन तो चाहिए ही होगी। ठीक है, देखो आपको डायरेक्टली याद है, बहुत अच्छी बात है, और आपको याद रखना भी चाहिए, आपको डायरेक्टली याद रखना भी चाहिए कि आपके पास इसका जो आंसर आएगा दैट इज स्मॉल u बाई कैपिटल U इज इक्वल टू 2y बाई डेल्टा माइनस y बाई डेल्टा का होल स्क्वायर। करेक्ट है, ये आपको याद रखना भी है, बिल्कुल सही बात है, ये आंसर आ गया तो। राइट, सो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पे आपके पास बाउंड्री कंडीशन, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन ही आपसे कई बार पूछ लेता है, तो बाउंड्री कंडीशन अगर मैं बात करूं यहां पे, अगर मैं बाउंड्री कंडीशन की बात करूं तो पहला बाउंड्री कंडीशन आपके पास क्या हो जाएगा, व्हाट इज द फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, क्योंकि 3 बाउंड्री कंडीशन आपको चाहिए, आपको 3 बाउंड्री कंडीशन चाहिए, तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन इज अ नो स्लिप कंडीशन एट y इज इक्वल टू 0, है ना। एट y इज इक्वल टू 0 पे u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एट y इज इक्वल टू 0 पे u इज इक्वल टू 0, बिकॉज प्लेट इज स्टेशनरी। प्लेट आपके पास कैसा है, प्लेट आपके पास स्टेशनरी है, सो एट y इज इक्वल टू 0, सबको दिख रहा होगा, दिस इज द x डायरेक्शन, दिस इज द y डायरेक्शन, सो एट y इज इक्वल टू 0 u इज इक्वल टू 0, राइट, दिस इज द नो स्लिप कंडीशन। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या बनेगा, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन है एट y इज इक्वल टू डेल्टा पे u इज इक्वल टू, u इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू u इंफिनिटिव, at y is equal to delta पे, at y is equal to delta पे the u is approximately equal to u infinitive, right, this is the second boundary condition। और थर्ड बाउंड्री कंडीशन आपके पास क्या होगा, थर्ड बाउंड्री कंडीशन क्या होगा, बता सकते हैं, व्हाट इज द थर्ड बाउंड्री कंडीशन, व्हाट इज द थर्ड बाउंड्री कंडीशन, at y is equal to, at y is equal to delta, at y is equal to delta पे क्या मैं लिख सकता हूं द du by dy is equal to 0, कैन वी राइट एट y इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, एट y इज इक्वल टू डेल्टा पे du by dy इज इक्वल टू 0, कैन वी राइट, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एट y इज इक्वल टू डेल्टा पे du by dy इज इक्वल टू 0, बहुत बढ़िया। द मैक्सिमम मिनिमा कॉन्सेप्ट, मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं ना मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट तो है आपके पास, क्योंकि y इज इक्वल टू डेल्टा पे दैट वेलोसिटी इज द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड दैट इज इक्वल टू द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, तो अगर वेलोसिटी वहां पे मैक्सिमम है तो du by dy क्या हो जाएगा, द du by dy इज 0, राइट। तो ये 3 बाउंड्री कंडीशन है, और इन 3 बाउंड्री कंडीशन को अगर आप यूज करेंगे देन यू कैन कमेंट u बाई यू इंफिनिटिव और u बाई कैपिटल U गिवन था, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू, ये आ जाएगा y बाई डेल्टा माइनस y बाई डेल्टा होल स्क्वायर, राइट, 2 इंटू y बाई डेल्टा माइनस y बाई डेल्टा होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, गेटिंग माई पॉइंट, राइट। चलो तो ये आ गया आपके पास, तो ये बिल्कुल सही बात है। अगले क्वेश्चन में आपको याद रखना है ना ये चीजें, अभी तो आपने हाँ डायरेक्टली बाउंड्री कंडीशन यूज कर लिया, ओके फाइन, आपको याद रखना है, बट अच्छा नेक्स्ट आपके पास बोलूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ था व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, सॉरी, हाँ लाइट का रिफ्लेक्शन काफी है काफी ज्यादा लाइट का रिफ्लेक्शन, ओके, इस क्वेश्चन में आपसे डिस्प्लेसमेंट थिकनेस पूछा हुआ है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट थिकनेस व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू 6 mm। देखो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस कितना होगा, 4 नंबर का क्वेश्चन था ये, तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस होता क्या है, द डिस्प्लेसमेंट थिकनेस इज इक्वल टू
displacement thickness is equal to, this is 0 tends to delta, this is 1 minus u by u infinity. This is the mathematical formula of the displacement thickness ना. यही तो mathematical formula है किसका, displacement thickness का, right? 1 minus u by u infinity dy by dy ये है. नाउ आपने अभी देखा कि वेलोसिटी का जो वेरिएशन है u by u infinity is equal to 2 into y by delta minus this is y by delta whole square. ये आ गया, ये आ गया आपके पास, है ना? ठीक है. और इस केस में आपको पता है, कल एक क्वेश्चन भी आई थिंक सॉल्व किया था इसके बेसिस पे, कि इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है, आप चाहो तो अगर आप भूल गए, याद नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, तो सिंपल सा इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं भी लगेगा, राइट? और अगर आपको डायरेक्टली याद है तो भी बहुत अच्छी बात है. ये आता है डेल्टा बाई 3, और डेल्टा बाई 3 मतलब ये हो जाएगा आपके पास 6, और ये हो गया 6/3, मतलब ये आ जाएगा आपका 2 mm, राइट? 2 mm, राइट? सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बॉम्बे. They ask you about this momentum thickness 2/15 times of delta. Okay, हाँ, so you can keep this in mind. मोमेंटम थिकनेस आपके पास, द मोमेंटम थिकनेस इज इक्वल टू 2/15 टाइम्स ऑफ डेल्टा. Because most of the time, so it happens. Because many times they ask you for this one command's momentum integral equation. Okay, it's very much quite frequent that you actually calculate this theta value. So 2/15 times of delta. Okay, yeah. Good morning. No sound. Abhi sound hai? Are you getting sound now? Yeah, पहले audio confirm कर लिया. Is the audio fine? Yes. Okay, fine. Okay, so next. So a question already Sandeep sir ने solve किया आपको. Sir, I think this question you have solved ना already. Yes, sir. So let us go to some other questions. Yes. So let us try to solve this question. Okay. A 10 kgs mass. Yeah. Good morning, all of you. Okay. Yes. Fine. So let's continue. So see here, a 10 kgs mass placed on an infinitely long horizontal massless flat platform is to be supported by a steady vertical jet as shown in the figure. So what happens whenever this block is kept here, because of the weight, gravitational force, the block will try to fall down. Okay, so this block is kept at some height because by virtue of some impact, okay, of fluid. Okay, so whenever the fluid goes and impacts the plate, then definitely the fluid undergoes some change in momentum, so it applies a force on the block. Okay, so now if you see, this question is also solved by sir. So type, kindly confirm me in the chat box, is this question also got solved by sir? सर ने सॉल्व किया था, संदीप सर ने ना? ओके फाइन, आई एम डूइंग दिस. ओके, सो नाउ इफ यू सी, for equilibrium of the block, 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 look, if I draw free body diagram of the block, then on this block there are two forces basically. One is weight and one is FV, vertical force acting on the block. Okay, so weight and this is vertical force. Okay, now how to calculate the vertical force? See here, if you take the control volume, for example, so if you take this control volume which is here, if you take this control volume, because this is the, look, many times people ask me how you have to choose the control volume. Look, always you should select that volume as the control volume under which fluid is undergoing change in momentum. Okay, for example, if you take this portion, is there any fluid that's going change in momentum? So type in the chat box, if you take this part of the jet which is coming, is there any momentum change? Is there any velocity change of the fluid that's taking place? Is there any velocity change of the fluid that is taking place in this block if I take this? No, correct? So similarly, if I take only this part or this part, similarly at that positions also there is no momentum change. So you should always choose your control volume in such a way that within that volume fluid undergoes some change in momentum. Okay, so now if you see, in this case fluid is entering in this way and then it is smoothly getting deflected like this. Okay, now if you see, weight is equal to FV, so weight is equal to vertical force on block,
So this is equal to minus, okay, since this is in opposite direction basically, so weight acting is equal to vertical force acted upon on block actually. So this is minus Fy on fluid. Okay, so this is minus Fy on fluid actually here, correct? Because whenever the block and fluid are in contact, then force acting on the block is equal to minus force acting on the fluid. Now if you see, weight is equal to minus force acting on fluid is nothing but m dot v out, momentum that's flowing out in the y direction minus momentum that's flowing in y direction, correct? Basically from Reynolds transport theorem we have seen whatever is the momentum change of the fluid, that momentum change is actually equal to the force acting on the fluid. Okay, so now if you see this control volume at the outlet is completely in the x direction, means normally if you take the classical xy directions, then outlet is completely in the x direction. Okay, so if outlet is completely in the x direction, what can I write in place of v out in the y direction? What is the velocity at the outlet in the y direction? So type in the chat box, what is the velocity at the outlet in the y direction basically, because complete fluid is actually moving in the x direction. Okay, so 0, correct? So this term is 0. So this implies weight is equal to minus of minus plus m dot v in the y direction. So this is equal to, so what is mass fluid that's coming in? Rho av. Okay, this height assuming to be very small, though no velocity changes in between. So rho av is mass flow rate into velocity at inlet is again v. So this is what we have. Okay, so rho av into velocity. Okay, so velocity at the inlet is v actually. Clear? So this is what you have here. So weight of the block has to be equal to rho a v square. Now what they're asking here in this case, this is supported by this jet. What minimum average velocity is required to hold the mass in plate? Okay, so you want v value. V is equal to square root of w by rho times of a. So this is equal to square root of weight of the block. So what is weight of the block actually? This is given 10 kgs mass is placed, correct? So 10 kgs into g. So g ka value kitna diya tha? G is also 10, great. So this is also 10 divided by density. So fluid is water, hai na? So it is given that infinitely mass is to be supported by vertical water jet. So fluid is water, so density is 1000. Density is 1000, correct? So density is also given 1000. And what about area? Diameter of the jet is 5 centimeters. Okay, so if diameter of the jet is 5 centimeters, then pi by 4 into 5 centimeters square is nothing but 25 into 10 power minus 4, correct? 0.05 whole square. So this is a simple calculation, and if you can calculate this, you will get the answer easily. So 10 cube can cancel this 10 power minus 1 times, so this can go to 1000 here. Okay, so 25 can cancel 100 4 times actually, so 160 by pi, so square root of 160 by pi actually. Okay, so this many meters per second. So let us calculate this value. What is the value of that? Okay, I think calculator is not opened. Let us open for a while. Get calculator. So 160 by pi. Okay, so get calculator online. So fine, 160 by pi square root value. Okay, so 160 by pi, so square root of the 7.136. Okay, so this is 7.136 meters per second. Okay, so this is how we can easily solve this question. 7.136 meters per second is the correct answer in this case. Clear? So shall we go for the next question? Okay, look, once you understand the Reynolds transport theorem correctly, then you can apply easily everything. Okay, very simple. Basically 2-3 steps. Okay, so from this step to this step, in between there is only one step I have written. Okay, so that's the importance of Reynolds transport theorem actually. Clear? Fine. So this is basically the question from Reynolds transport theorem. So let's go for the next question. So let us see. The speed of propagation c of a capillary wave depends on the density of the fluid rho and the wavelength of the wave lambda and the surface tension sigma. If the density and wavelength remain constant, halving the surface tension would lead to a new velocity c dash, given by c dash is equal to variation. Okay, so first of all, if you want to calculate, if you want to know the dependence of c on other terms, we have to do some dimensional analysis, correct? Because even I don't know the formula. Look, it is given that this c, velocity of the wave, depends upon lambda, density and surface tension, but they didn't give me what is the formula for that. Okay, so कल वाले FM सेशन का PDF कहाँ पे मिलेगा? This PW ऐप में भी मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल है ना, उस चैनल पे भी मिलेगा. ठीक है, MA डिस्कशन के लिए. फाइन. सो इफ यू सी दिस,
look carefully. They have given wave speed is depending on density, wavelength and surface tension. Correct? हमको यही पता है. So now if you see the dimensions of C, velocity, okay, meters per second, dimensions of density, kg per meter cube, so kg per meter cube, dimensions of wavelength again L, and surface tension ka dimensions Newton per meter, so mt power minus 2. Correct? Force is mlt power minus 2 divided by length gives you mt power minus 2, है ना? PW, yes, PW app, okay. So fine, if you see this, so these are the dimensions. Now if you go for Wallis method, let us say C is equal to some function of some constant into rho power A, lambda power B, sigma power C, for example. So dimensions, if you equate dimensions of this L t power minus 1 is equal to K is anyhow dimensionless constant, so density kg per meter cube power A, L power B and m t power minus 2 power C. Okay, so now if you see this, this is m power A plus C, L power minus 3A plus B and T power minus 2C. These are the terms actually. Okay, so now if you compare dimensions on both sides, L t power minus 1 is equal to, so this gives you A plus C is equal to 0, minus 3A plus B is equal to 1 and minus 2C is equal to minus 1 actually here. Okay, so यहाँ से C का value कितना होता है 1/2, है ना? So C value is 1/2, so A का value minus 1/2. And if A is equal to minus 1/2 here, this is total 3/2. So 3/2 plus B is equal to 1. So B is equal to minus 1/2. Okay, so these are the values, which means this C is equal to some constant into density power A. So what is density power A? Minus 1/2. Lambda power B. So what is B? Minus 1/2 again. Sigma power C. So C का value कितना है 1/2. Okay, so that means one thing is very clear. C is equal to some constant into sigma by or square root of sigma by lambda into rho. Okay, so this is what we have. So this is the dependence of C on these terms, surface tension and all these things. Okay, so what they have given you. So अगर आपने situations 1 and 2 समझते हो, sigma 1, rho 1, lambda 1, C1 and sigma 2, rho 2, lambda 2, C2. So this C2 by C1 is equal to square root of C2 by C1 is equal to C is proportional to sigma, so sigma 2 by sigma 1 into lambda 1 by lambda 2 because inversely proportional है and rho 1 by rho 2. Now question में क्या दिया था? If density and wavelength remain constant, मतलब density का variation and wavelength is same. Okay, so lambda 1 by lambda 2 is same and rho 1 by rho 2 is also same. Okay, sir, you used Wallis method as dimensions are equal to number of unknowns. Yes, basically that's it. Okay, since we have 3 dimensions and 3 unknowns, we have directly used for Wallis method. Okay, so this implies C2 by C1 is equal to square root of sigma 2. Sigma 2 what they have done? Halving the surface tension. So surface tension को half किया. Sigma 1 by 2 divided by sigma 1. So sigma 1 gets cancelled. C2 by C1 is equal to 1 by square root of 2. So C2 is equal to C1 by square root of 2. Okay, so C dash is equal to C by root 2. Clear? This is the correct answer and C dash is equal to C by root 2 is what you have. Clear? Fine. Look, this question even after solving till this point you can answer. Okay, because guys try to understand. Okay, they have given lambda and T are constants. Okay, so if this is constant, C is directly proportional to sigma. So if surface tension is decreasing, velocity should also decrease. Okay, so out of these 4 options, this is the only option where C dash is actually less than C. In all other options, C dash is either equal or greater than C. Okay, so that's why these 3 things are, you cannot use them. C is the correct answer. Okay, when you don't know the formulas, you can go for dimensional analysis very simply, and that dimensional analysis will give you very accurate answers. Okay. Hi, Nitika, Raghav, Himanshu, all of you. लेकिन यहाँ नोएडा में बहुत ठंडा है यार, है ना? North India बहुत, it's very cold, especially in this time. Fine. So let us go for the next question anyway. What is given? Something. For an inviscid fluid with a density 1 kg per meter cube, the Cartesian velocity is given by
velocity is equal to some function times of I plus j. Neglecting the body forces, find the magnitude of pressure gradient in Pascal per meter at x is equal to 1 and y equal to 1 and t is equal to 1 second. Sir, कुछ physics के question थे? No, like it's not like physics. We are as of now we are dealing with this fluid mechanics. Okay. Last में थोड़ा बकिंगहम पाइते हम explain कर दीजिए sir. Definitely, I'll explain you. Nitika, sir, कुछ physics? Yeah, I answered this. Are you from IIT Madras, sir? Yes, once upon a time, not now. हिंदी, okay. मैं हिंदी में explain करने की कोशिश करता हूँ. Okay. For an inviscid fluid flow. So, पहले क्या दिया? Fluid में viscosity का effects नहीं है. Okay. So, inviscid fluid, for an inviscid fluid with the density 1 kg per meter cube, the Cartesian velocity field is given by, so velocity field कितना दिया था? Minus 2x plus y t times I bar plus 2x plus y t j bar. Okay, so this is the velocity field in meters per second. Neglecting body forces, find magnitude of pressure gradient at this location at this particular time. Around after some decimal places, 2 decimal places. Okay, so आपने जेई एडवांस्ड दिया था? नहीं दिया. Nitika, no, there is nothing like physics question. Basically, we are doing mainly for fluid mechanics, thermodynamics, solid mechanics, and what I'm teaching, engineering mathematics. Okay, so these are the subjects that we are dealing at this moment, Nitika. Fine. Okay, so let's continue this. So basically, if you take for any type of flow, if you apply Navier-Stokes equation, Navier-Stokes equation is rho x bar minus del p plus mu times of del square v is equal to rho times of total acceleration vector. है ना? This is actually your Navier-Stokes equation. Correct? Now in this Navier-Stokes equation, they told body forces को neglect करना है. So fluid भी inviscid है. So del p is equal to or minus del p is equal to rho times of dv by dt. है ना? So, and density का value कितना दिया? 1 kg per meter cube. So density is 1 kg per meter cube. So यहाँ density के जगह में 1 substitute करना है. Okay. So this implies minus del p is equal to dv bar by dt. है ना? So now tell me one thing. ये दोनों scalars या vectors है? ये दोनों components, ये दोनों quantities scalars या vectors? Vectors, है ना? So if you want to calculate, look, दो vectors है, दोनों vectors equal है. So इसलिए अगर मेरे को इस vector का magnitude चाहिए तो if I calculate the magnitude of this vector, then both will be same. Correct? So basically magnitude of pressure gradient is equal to magnitude of acceleration vector. Okay, so acceleration का vector क्या है? ax I plus ayj. This is a two-dimensional and unsteady flow. So what is ax? Dou u by dou t plus u into dou u by dou x plus v into dou u by dou y plus w into dou u by dou z, but only 2 dimensions, so I am deleting that. Acceleration in y direction is equal to dou v by dou t plus u into dou v by dou x plus v into dou v by dou y. Okay, now what are the terms you have? U का function कितना दिया and v का? U is minus 2x plus y times t, minus 2x plus y times t, and v is 2x plus y into t. Okay, so now if you differentiate this, dou u by dou t, so dou u by dou t minus 2x plus y plus u into, what is u? Let us substitute directly, minus 2x plus y into t into dou u by dou x. Okay, so if you calculate dou u by dou x here, what you will get? T square, and you have a minus 2 here. Correct? This is what you have. Okay, so t into minus 2 is what you get for dou u by dou x plus v into dou u by dou y. So this is t. That's it. Okay, so similarly here, if you see dou v by dou t, 2x plus y plus u into dou v by dou x, which is t times of 2, so t square and 2 plus v into, so 2x plus y into t into dou v by dou y. Okay, so dou v by dou y value is t, so we have t square here. Okay, so this is 1, of course. Now what is the point at which we want this
उसका अलग चैनल होगा. Yeah, definitely there is one a different channel basically. Yeah, fine, right? Everything is fine. Okay, so I'm continuing. Basically, at x is equal to 1 and y is equal to 1 and t is equal to 1. So substitute karo ax at x is equal to 1, y is equal to 1 and t is equal to 1 second. Okay, meters is equal to. So अगर यहाँ x y t ये सब के जगह में एक सब्स्टिट्यूट किया तो -2 + 1 -1 plus -2 plus 1. Okay, so this is again -1 -1 into -2 plus 2 plus this is again 3, correct? Because 2 plus 1 which is 3, 3 into 1. So this total value is how much? 4 meters per second square. है ना? So this is 4 meters per second square, correct? So did you all get this value? Sir, density नहीं ली है आपने. Density का value 1 दिया ना? So that's why. देखिए मैंने density का value 1 लिखा था, ठीक है? So इसलिए जमाजम क्यों? What happened? Fine. Okay, let's continue, guys. Now see here. This is 4 meters per second square. एक बार कंफर्म कीजिए वैल्यू करेक्ट है ना? कई जगह पे कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं है ना? 4 meters per second square, correct? Yes. Now let us go for AY. AY at the same location 1 meter, 1 meter, and at same time t is equal to 1 second. Okay. So this is equal to. So if you substitute 1, this is 3 plus -1 into 2 -2 plus 3 into 1. So this is 3 again. So 6 minus 2, which is 4 meters per second square, correct? So this is 4 meters per second square. AY is also 4. So therefore your acceleration vector is equal to 4i plus 4j, correct? Which is dv by dt, of course. dv by dt. So how to calculate the magnitude of the vector? You know, magnitude of acceleration is equal to square root of 4 square plus 4 square, which is 4 times of square root of 2 actually here, correct? So 4 times of square root of 2 is actually the magnitude of the acceleration, which is in turn equal to the magnitude of the pressure gradient. Okay, so 4 times of square root of 2. So what is the value of 4 times of square root of 2? 4 into square root of 2, 5.6568, 4.656 to 2 decimal places. So 4.66, you can write 4.656 na, 5.66. Square root of 32 na, so square root of 32 is 4 times of square root of 2. So 4 times of, okay, 5.656, ठीक है, 5.656. So 5.66, 5.656 है ना कैलकुलेशन में. So calculation में 5.66 है. Okay, fine. 5.66 is the correct answer. Okay. Look, here I want to take one more step and I have to discuss one thing actually. Look. Complete fluid mechanics in analysis form is in this equation, Navier-Stokes equation. Body force vector minus pressure gradient plus mu into del square V is equal to rho times of dV by dt. Okay. Now, kinematic viscosity, nu है ना, mu by rho. This quantity is very, very, very important in fluid mechanics. Okay. Why? Why kinematic? What is kinematic viscosity actually? Anyone? Can anyone tell me what is kinematic viscosity? What is kinematic viscosity? Or why kinematic viscosity is important? What is so special about kinematic viscosity? What is so special about this kinematic viscosity term? Anyone? Anyone in the chat box? Momentum diffusivity, correct? Tell us about momentum diffusivity, resistance to momentum transfer. Okay, so basically if you see carefully, look, I'll ask you one question. First of all, tell me this. You know, this mu is nothing but internal resistance offered by the fluid. Okay, means if fluid is trying to move, then this mu this mu denotes what is the extent to which it can resist the flow, correct? Now, what is density basically? What is the importance of density? Density signifies inertia. Okay, so this density signifies inertia. Okay, because I'll ask you one question. Try to understand this. Let us suppose you have two masses, both of 1 kg. One is cotton and one is solid sphere. Okay, some metal sphere, for example. Let us suppose if both are coming towards you at same speed. Okay, so 1 kg of cotton is coming and 1 kg of this small spherical ball made of some metal is also coming at same velocity. Now, in which case you feel it difficult to stop the ball? In case of cotton or in case of this metal?
So in ME 2023 paper, why can't we solve using Navier-Stokes equation? They asked pressure 2.2. We can solve using Navier-Stokes, no issue. Okay, because since viscosity is 0, directly this, look, I'll show you. When viscosity is 0, this equation becomes what do you say? This equation becomes your Bernoulli's equation actually. Okay, Euler's equation. I'll tell you. Okay, fine. Now in case of solid sphere, you feel it difficult, hai na? So basically, whenever a 1 kg cotton ball and a 1 kg metal ball is coming towards you at same velocity, you feel difficult to stop the metal ball. The reason is mass is same, but because of the density being high for the solid sphere, it has high inertia. Okay, so density signifies inertia of the substance. Okay, so what inertia tries to do? When inertia is more, means when density of the fluid, density of any substance is more, the tendency to continue its motion. From Newton's first law, inertia, mass is measure of inertia, actually density is measure of inertia. So if you see, every body tries to continue in its form of uniform motion or rest until unless disturbed by some external force, hai na? This is Newton's first law of motion. So density of the fluid always signifies what is the extent to which it can move, and this rho is, this mu is the property which tries to resist the flow. Okay, so basically out of these two, this property is trying to resist the flow, and this is trying to maintain the flow. So this is ratio of two contradicting properties, and actually this property tells you how effectively flow can happen when there is some flow. Okay, means let us suppose if there is a flow and if there is some obstacle, then this obstacle will try to shift the diffusivity, means basically this obstacle will try to shift the effect of viscosity, but the fluid density will try to move the fluid. So out of these two, which is strong is decided by this ratio. Okay, so that's why this is also called, as you told, momentum diffusivity. So this quantity is very much important. It's not like simply a ratio of two quantities. Okay, what are those two quantities? This is important. Okay, so one is trying to resist the flow and one is trying to maintain the flow actually. Okay, so if kinematic, look, I'll tell you one thing. Reynolds number, you know this, right? Reynolds number, V average D by nu. Okay, now try to understand this very carefully. Okay, normally in case of Reynolds number, the flow velocities are very high. Okay, there is some turbulence mixing and all these things happen. Now try to tell me one thing. Let us suppose if you want to transfer one fluid from one location to another location. Now if you decide the discharge, then these two quantities are in your hand. Yes or no? Correct? V average into D is in your hand because pipe diameter is in your hand. Depending on pipe diameter, for a fixed discharge, means let us suppose for 1 month you have to transport this much amount of fluid from one location to another location. Okay, let us suppose you are transferring petrol from Visakhapatnam to, let us say, some Secunderabad, for example. Okay, so in that case, once discharge is known to you, choosing pipe diameter is in your hand. Okay, so once you choose it pipe diameter, then V average is automatically adjusted. So these two quantities are in your hand, so you need not do anything about them, but you cannot change this quantity. Okay, that is for the fluid itself, that is left for the nature, that's not in your control. So that's why this kinematic viscosity actually gives this Reynolds number. Okay, now whenever the Reynolds number is actually high, okay, so try to understand this. If kinematic viscosity is low, Reynolds number is high. Correct? And if this kinematic viscosity of the fluids is generally high, then Reynolds number is low. Normally you decide this based on the turbulence laminar regimes. Correct? In laminar, look, this concept is very important, I am telling you. In case of laminar flow, all the layers move in an organized manner, but in case of turbulence, you go in a very random way. Correct? So basically, what is the meaning of mu being low? Mu is mu by density. If this is low, that means this inertia force is high and this is actually low. Correct? In this case. Similarly, if nu is high, if this is high, then in that case mu by rho, this viscous force, sorry, something happened. Okay, so here if you see, this mu is high generally and this is low. Correct? Means I want to tell you one thing. Look, let us suppose if you are going on a bike. Okay, so I want you to answer this question. Try to tell me. Let us suppose if you are going on a bike, you are going slowly. Okay, 30 kilometers per second, for example. Sorry, not second, it's very high speed. 30 kilometers per hour. Okay, so let us suppose you are going in 30 kilometers per hour. Now if you are going at 30 kilometers per hour and let us suppose suddenly you applied some brake, disc brake of your bike or something,
you will actually stop smoothly, correct? Because 30 kilometers per hour is some low speed, so you will stop in a organized way. But let us suppose if you are going at 90 kilometers per hour or 100 kilometers per hour, and if you apply the brake, then what happens? Your bike will get shake. Yes or no? Correct? You actually gets wobbled on your bike. Correct? Yes or no? Have you experienced this? If you are going at high speed and suddenly if you apply brake, then your bike actually मुंह टूटेगा. Of course, helmet लगाना है इसलिए. Okay? So correct? This happens whenever you are going at low speeds. If you apply brake, you will stop in a smooth way, or you will maintain your momentum in a smooth way. But if you are going at high speed and if you apply brake, then actually your bike shakes. Correct? Now observe this case. Whenever this kinematic viscosity is low, basically my intention is whenever Reynolds number is high, your dynamic viscosity is low and your inertia is high. Okay, what is the meaning of inertia being high? Actually the body is moving at maybe high velocity or generally high momentum. Okay, so whenever this is high, whenever the momentum is very high, but the brake normally why you shake is the brake effectiveness will be less at your high speed. Okay, so whenever your inertia is high, but whenever this dynamic viscosity, the brake is low, then actually this body will shake. Okay, so whenever this body will shake, that you call as turbulence, and high Reynolds number is classified as turbulent flow, where some unorganized mixing or moving of the layers happen because of this inertia force being very high and this dynamic viscous effects being very low. But in this case, in case of low Reynolds number, you are moving at low velocity, but the brake efficiency is also good, so that's why your fluid comes to rest in a smooth way. Clear? This is the logic behind. Normally they have experimentally given some values, 2300 for pipes, all these things, but actually did you understand the physical meaning? Okay, how turbulence delays boundary layer separation? Yes, I'll discuss this basically with the help of the golf ball example. Okay, one very classic example. Clear? But first of all, try to tell me this. Is this clear to all of you? Did you understand why in case of turbulence, means basically when your Reynolds number is very high, did you understand why there is some introduction of turbulence into the flow? Correct? Common life example here. If you are going at 90 kilometers per hour and if you apply a brake, then what happens? Your vehicle will swag. Correct? Same thing happens in the fluid also. Okay, whenever fluid is moving at high inertia, suddenly if there is some viscosity, if there is some plate or something, whatever, if you keep some obstruction, then definitely what happens? The fluid will also shake. That is called turbulence. Okay, and physically from experiments हमको कुछ values भी है from flow through pipes. Normally at Reynolds number 2300 is what it decides. Clear? So that's why this quantity is very important. Okay, fine. So anyway, let's get back to this. I just want to explain you one point here before going for the next question. So see here. Okay, crystal clear? Good. Fine. I hope all of you are enjoying the session. Okay, now you are understanding some good things of all the points actually. Clear? So now let us see this. Whenever flow is inviscid, then there is no effect of this viscous force terms. Okay, this equation becomes rho x bar minus del p is equal to rho into dv by dt, and this equation is called Euler's equation. Okay, so this equation is called Euler's equation. If fluid is in static condition, what is the meaning of static condition? What is the meaning of static condition? Static condition means the body can be either completely at rest or it can move at uniform velocity also. Okay, there is misconception in many minds that static condition means the body has to be at rest. Need not be. Okay, the body can also move with uniform velocity, okay, or constant velocity, because if you see static condition means sigma f is equal to 0, है ना? Which means derivative of momentum has to be 0, because force is equal to rate of change of momentum. For this quantity to be 0, this can be either 0 or this can be some constant value also. Okay, so that's why rest need not be always, static condition means need not be always only rest, it can also move with uniform or constant velocity. Okay, now if you see this whenever the fluid is in static condition, this dv by dt acceleration is 0, so this equation gets converted to
rho x bar minus del p is equal to 0. If you assume there is no things like electric fields or magnetic fields, if there is only gravitational field that is acting, then gravitational vector body force is equal to minus g times of k. If you substitute here, rho times of minus g k bar minus dou p by dou x I plus dou p by dou y j plus dou p by dou z k. This is equal to dou p by dou z k bar is equal to 0. Okay, so this implies dou p by dou x is equal to 0, dou p by dou y is equal to 0, and dou p by dou z minus dou p by dou z minus rho g is equal to 0. So this implies dou p by dou z is equal to minus density of the fluid times gravity. This is nothing but your hydrostatic law. Clear? Fine. This is actually your hydrostatic law, what you see. Okay, so whenever, and obviously if you apply this Euler's equation along a streamline, you will get Bernoulli's equation. Okay, so this complete fluid mechanics, right from second chapter hydrostatics to till Navier-Stokes equation or viscous flows, is depending only on this single equation. Okay, so if you assume one assumption at one particular stage, you will get this case of hydrostatic equation finally. Clear? Okay, so shall we go for next question? Fine. So let us see this. Okay, this is some meta center question. So see here, basically a wooden cylinder of specific gravity 0.6 of length L and diameter D floats in water of density 1000 kg per meter cube. Find out the minimum value of D by L for which the cylinder flows with its axis vertical. Okay, so there is some concept of meta center. Basically it's a floating body. So for case of the floating bodies, your meta center should be your metacentric height should be actually positive, correct? So let us see. So let us suppose there is some water line and there is some cylinder. Okay, so there is some cylinder which is floating like this. Now if you see the section here, so if you see this section, then this section here, whatever is the section that you have here, means basically this section, if you project, then you will get a circle in case of a cylinder, correct? So this is D, diameter is D. Okay, diameter is D and this is length L, total length L of the cylinder. And let us suppose this portion is H, which is submerged inside the fluid. Okay, this portion is H, which is submerged inside the fluid. Now they are asking you, so please solve that question from ME 2023 pressure gradient again by using Navier-Stokes. I am little confused. Okay, Pritam, I will solve. Okay, no issue. I will solve that question using Navier-Stokes equation. Okay, so let us finish this question. Yeah, here. So basically, first stability, axis vertical. Okay, so axis vertical है cylinder का. So first stability, metacentric height has to be positive. Okay, so हम metacentric height को कैसे calculate करते हैं? Metacentric radius minus this BG. Okay, now if you see, to calculate this BM and BG, we know BM is nothing but moment of inertia about this axis divided by submerged volume, correct? So how do you calculate this moment of inertia? About what axis you will calculate? Look, this BM BG, BM minus BG, yes, of course. Okay, so basically I want to tell you one thing. Many students find difficulty here in choosing moment of inertia. They don't understand properly about what axis of what figure you have to take the moment of inertia. Look, this is called water line. Okay, so basically this is called water line. Okay, so this is your water line. So whenever this is your water line, look, at that water line, if you cut the solid, okay, let us suppose if there is some solid at this water line, if you cut the solid, then at this point, at this section, the cross section will be coming here, correct? So at this, when you cut this solid, then at this water line you have the cross section of the solid. Then you have to take moment of inertia about perpendicular axis, means in the top view this axis will be something like this. Okay, so this axis is YY. Okay, this axis what you are seeing in the top view is nothing but the perpendicular axis to the plane. Okay, so about that axis of this cross section you have to take the moment of inertia. Clear? So anyway, now if you see BG, so to calculate BG, so center of buoyancy will be at the center of this, center of buoyancy will be at the center of this volume, center of this volume, and center of gravity will be somewhere here. So BG distance we can easily find. Okay, so this
from here this G is at a height of L by 2 and this is at H by 2. So BG is equal to L minus H by 2. Okay, so L by 2 minus H by 2. Clear? L by 2 minus H by 2. Now if this is L by 2 minus H by 2, here you have to calculate H. Okay, because IYY, moment of inertia of cycle, is pi d power 4 by 64 into submerged volume. So what is submerged volume? Area of the cross section into submerged value, height, H. And similarly here L minus H by 2. So we don't know what is H. So to calculate H, how do we calculate this? How do we calculate H actually? How do we calculate H? Weight of cylinder. Okay. After this question you can come back. 1, 2 questions you can solve. Okay. Okay, fine. I will solve, no issue. Okay. So let us see. So basically, if the body has to float, then definitely weight of body should be equal to buoyancy on body. Correct? Buoyancy force on body. Buoyancy force on body. Buoyancy force on body. So weight of the body. So what is weight of the body? Density of the body into G into volume, which is pi by 4 d square L, is equal to buoyancy force acting on the body. So density of the fluid, and what is the fluid here? Water. Na? It is given specific gravity of length L. Okay, is doubled, is floating in water. Okay, so let us say density of water into G into the volume of solid which is floating in water is submerged in water is pi by 4 into d square H. Okay, so now if you make some simplifications, pi by 4 d square, G gets cancelled. So H by L is nothing but specific gravity of the body. Okay, so which is given 0.6 something. Correct? They have given 0.6. Specific gravity is actually 0.6. So H value is 0.6 times of L actually here. Okay, so H is 0.6 times of L. Now GM has to be greater than 0 for stability. Correct? So what is GM? BM minus BG. Okay, BM minus BG. So BM is pi gets cancelled, d square can cancel this d square times, 4 can cancel this 16 times. So 6 d square by 16h, d square by 16h minus BG. So what is BG? L minus H by 2. L minus H by 2 should be greater than 0. Okay, so this should be greater than or equal to 0 generally. In the limiting case, if you take equal to 0 for example, then this is 2 cancel this 8 times, d square by 8h. Okay, so d square by 8 times of h. And what is h? 0.6 times L. This minus L minus h. So 0.4 times of L. 0.4 times of L should be greater than 0. Okay, so this implies, from this we can write d square by 8 times of 0.6 L should be greater than 0.4 times of L. Okay, so this you can write this as, if you shift this L here and the constant to the right side, then d square by L square should be greater than or equal to 0.4 into 0.6 into 8 actually here. Okay, so this means d by L should be greater than or equal to, d by L should be greater than or equal to square root of this value 0.4 into 0.6 into 8, 4.8. Okay, 6 8s are 48. So this value. So the limiting case where d by L value comes is minimum of d by L is equal to square root of 0.4 into 4.8. So what is the value of this? A calculator, 0.4 into 4.8. So 0.4 into 4.8. So 1.92, take a square root of this, 1.386, almost 1.386 has to be the ratio of diameter to length, the minimum ratio, such that the body will be in stable equilibrium during floating condition. Clear? Fine? Yes, 1.386. Okay, 1.38, whatever number of decimals is given, 1 point owned after 3 decimal places. So 1.386 is fine. आज सारे 2022 के questions है क्या? This is 2022 question. I don't know actually. Let me check. Okay. No, nothing like 2022. We'll go for some other questions also. Okay. Clear? So type in the chat box. Is this clear to all of you? Type in the chat box. So meanwhile, try next question. Okay, so this is next question. There is a jet which is coming here. So please try this question. So इसका horizontal वाले एक
करवा दीजिए. ओके, मतलब एक्सिस हॉरिजॉन्टल वाला है ना. ओके, मैं करता हूं. Okay, energy drink pillow, sir. No issues. Fine. Fine. Okay. So this question, this is also 2022 question. Okay, fine. We'll solve this question, then we'll go to some other questions. Okay, no issues. But main intention is to solve questions of all models. That's it. You must be so tired, na sir. Yeah, of course. फिर से explain कर दीजिए. Okay. This question. So basically, what we have done, for the body to float, weight of the body should be equal to buoyancy acting on the body. So weight of the body is this, and buoyancy force acting is density of the fluid into G into volume of the body which is submerged. Okay. So from this equation, H by L is H by small l is density of body by density of water. So this is specific gravity of the body. Okay. So specific gravity of the body is equal to 0.6. So H is equal to 0.6 L. Now for stability, this GM has to be greater than 0. So we have taken the limiting case also. So that's why equal to is also there. So this metacentric height is basically metacentric radius minus the gap between BG. So what will be this BG? This G will be at a height of capital L by 2. This B will be at a height of small l by 2. So this difference is L minus H by 2. Okay. And if you see this calculation, that's what I have done. Then simple mathematical adjustment gave me 1.386. Okay. Fine. So solve this question and tell me the answer. Solve this question and tell me the answer. Consider a cart of mass 10 kgs placed on an inclined plane at an angle of inclination 60 degrees. Okay. So is angle of inclination 60 degrees with horizontal as shown in the figure. A turning vane is of negligible weight is mounted on cart. A horizontal steady water jet is issued from the stationary nozzle of area 0.1 meter square. So इस nozzle का area क्या है? Means fluid jet का area 0.1 meter square. Okay. And strikes the turning vane as shown in the figure. The vane turns the jet downward parallel to the inclined plane. So basically this vane is turning this jet parallel to this inclined plane. Okay. Find out the minimum jet velocity in meters per second which will not allow the cart to come down. Okay. So basically when cart comes down, when there is some net force like this. Okay. So this fluid jet is trying to put this cart in that position. Neglect friction. Consider density of water as 1000 and acceleration is 10. Round off to 2 decimal places. So what is the velocity of the jet? Okay. So try to understand carefully here. First of all, mass of the cart is also given. So see carefully here. Guys, this is a good question. So let us see. Fine. Okay. Now this is cart, for example. Now, if you draw the free body diagram of cart, for example, there is no friction at the wheels. It is given. So basically, this component will be mg sin theta, which keeps the, if mass of the cart is m, for example, okay, then in that case mg sin theta. If this angle is theta, then it's very clear mg sin theta will be this component. Correct. Now this is the force which is acting on the cart, gravitational force. Now, sir, please question PDF provide on Telegram group, please. Yes, we are providing now. Yesterday it might be uploaded. Correct. Today also we'll upload. No issues. Okay. So now, if you see this mj sin theta, so because of this force, the cart will try to come down. Correct. Because if you keep an inclined, if you keep a body on an inclined plane, then definitely it will try to start. If there is no friction, of course. Okay. So here, if you see mj sin theta, now this has to be balanced by the force in this direction. Correct. So force on cart by fluid, force
on cart by fluid. Okay, so this is what you have, and let us say this is the positive direction, for example, this direction along the plane. So this is the direction. So if this block has to be stationary, then the weight component mg sin theta should be balanced by the force on cart by fluid, correct? So if you see, mg sin theta is equal to force acting on cart, and force acting on cart is equal to minus force acting on fluid, correct? Because cart and fluid are in contact, so as per Newton's third law, this is minus force acting on fluid. So this implies mj sin theta is equal to minus F on fluid. So what is force acting on fluid? Momentum change of fluid. So m dot v out in the tangential this t direction minus m dot v in the t direction, basically. Okay, now if you see the fluid jet, initially it is coming like this and it is moving out like this. Okay, now try to understand this carefully. If you take this is the control volume, because if you take this as your control volume, because this is the volume within which there is some velocity change. Okay, now to this control volume, the fluid is entering horizontally at a velocity v. If there is no friction along the way, it will also come out at the same velocity v, correct? Now how to write the components? Okay, Mos Kadi Mos means I don't know, fine. So fine. So if you see v dot m dot v out at t minus m dot v at in. Okay, so first of all, at the outlet, if you see carefully, this is in the downward direction, correct? So we have taken this positive t in the upward direction, but the velocity is in the downward direction. So mg sin theta is equal to minus of m dot into v out at the t direction. So basically v out is in this direction, but positive direction of t is this, but the fluid is coming in the opposite direction, so that's why this is minus v. Clear? Did you all understand why I have written minus v? Because this t direction I have taken in the upward direction, but the fluid is actually traveling in the opposite direction, so that's why there is a minus sign here. Clear? Yes or no? Is this clear to all of you? Did you all understand why I have kept a minus sign? Because if you see, this t is in this direction, but the fluid is leaving the control volume in this direction, so that's why if you see, I have kept a minus here. Okay, so minus m dot into velocity at the inlet in tangential direction. So basically this is the tangential, this t direction, fluid is coming in this way, so fluid is coming in this way, velocity v at the inlet, and this angle is theta. So if you resolve this, what you can see, this is v sin theta, and this along this we have v cos theta, hai na? So this is v cos theta and this is v sin theta. Now out of, just a minute, something happened. Okay, v sin theta. Okay, so this is v cos theta and this is v sin theta. Now out of these two components, what is the component in the t direction? This component, correct? So this component is in t direction and this is in the upward direction is positive. This is also in the upward direction. So directly without any minus sign, you can write v cos theta. Clear? Now if you simplify this equation, mg sin theta is equal to minus of this complete minus will cancel out because of the plus. M dot is same because whatever the mass is entering, same mass flow rate should come out. So m dot times v is also constant, v into 1 plus cos theta. Okay, so mg sin theta is equal to mass flow rate rho a v square, correct? Rho a v is the mass flow rate into 1 more v, so rho a v square into 1 plus cos theta. So v square is equal to mg sin theta by rho times of 1 plus cos theta, and since you need only velocity, we can put a square here. Okay, square root v is equal to, there is one square root because you need only v na, so velocity is what they are asking you. So this is the expression basically. Okay, so square root of mg sin theta by rho g times of 1 plus cos theta. Clear? Did you all understand how I have written the velocities in this momentum equation? That is the main important thing. Okay, whenever here the velocity is in the tangential this t direction, then this t direction, the resolution of this inlet velocity in the t direction is towards upward. That's why I did not put any minus sign. But here this is in the downward direction, opposite direction, so I have kept a minus sign. Clear? That's it. So this is the value. So if you substitute numerical values, numbers are given. Mass of the cart m. So what is mass of the cart? 10 kgs. Okay, so this is 10. What is g? G is also 10. Then
what is this angle? 30 degrees, na? They have given something. 60 degrees. Okay, so this is 60. So sine 60 root 3 by 2 divided by density. So fluid is water, na? What is hitting? What is the fluid? Water. Okay, so 1000. Density is 1000. Okay, they have given anyhow 1000. So this is 1000 into 1 plus cos theta, which is 1 by 2. Okay, so this is 3 by 2 basically. So this value you have to calculate. You will get the answer in meters per second. Clear? So this is meters per second. Acha, area bhi hai na? So rho a v square. Yes, you have area also. So density into area will come to the denominator. So what is area? So directly this 1 plus cos theta I am writing 3 by 2 into area. So what is area of the jet? Area of the jet is given, yes, 0.1 meter square. So 10 power minus 1. 10 power minus 1. Okay, so now if you simplify these values, this 10 power minus 1 will cancel this 100 times and these two zeros will get cancelled. So 2 and 2 gets cancelled. So then square root of 3 by 3. So 1 by square root of 1 by square root of 3. These many meters per second. That's it. Okay, so you have to calculate this value, 1 by square root of 3 whole square root. Okay, so 1 by square root of 3, what is this value? 1 by 3 square root. Okay, so 0.55577, take square root of this again, 0.7598, 0.76 almost. How many decimal places they have given you? Round off to 2 decimal places, so 0.76 meters per second. Okay, so 0.759, yeah, 0.759. So if you round off, 0.76 meters per second. Clear? So the fluid inlet and outlet velocity is same? Yes, because we assumed that there is no friction along the vane. Okay, normally in hydraulic machines you can see in case of turbines and pumps, they give velocity coefficient. Okay, but here nothing is given, so you can assume the vane is frictionless. So whatever is the velocity of entering, same velocity it is coming out. Okay. But this actually do not happen in industries. Okay, when I was working with HPCL, we could see the turbine gets so much eroded that the velocity along the blades, means when there is a blade passage, when the fluid enters, let us say some gasoline or diesel is entering. So whenever the diesel is entering, then it comes out at some different velocity, because we could easily identify some losses. So we know that. Okay. एक moving plate वाला कर दो ना. Yeah, moving plate questions yesterday I didn't solve. Okay, today I think I've kept something. Okay, nothing. Moving plate is not there. Not there. Fine. Okay, so tomorrow I'll keep a question on moving plate and I'll solve that. Okay. So look, very simple. In case of moving plate also, nothing is there. You can see in Reynolds transport theorem, I have written this now. Look, I'll explain you with one simple example for moving plate. So try to understand this. Let us suppose if there is some diagram like this, for example. Fine. Okay. So let us suppose this blue line, whatever I have done, is fluid, for example. Okay. Fine. Okay. So if this is moving plate, now let us suppose if this is coming at some velocity v, fluid is coming and fluid is leaving. Now basically if you see, the control volume is nothing but this, because this is the volume within which fluid is going, some change in momentum. So you select that volume. So force acting on the cart in x directions and y directions, for example. Okay, so let us suppose the cart is moving, means basically that vane is moving at some velocity u. Okay, now from Reynolds transport theorem, you know, sigma f acting on fluid is equal to steady state, of course, integral over the control surface. When you take momentum, b is momentum value. If you take relative velocity, of course, I told sometimes control volumes can move, so beta is actually v r bar. Okay, so this is equal to v r bar times rho into v r bar dot n cap ds. Actually, correct? This is what I have told, which is mass flow rate leaving out minus mass flow rate leaving, v relative at inlet. And you have to calculate this mass flow rate also
with respect to relative velocity. Okay, so now if you see, if this is x direction, for example, then in x direction, what is the case? Sigma fx on cart. So horizontal force acting on cart is equal to negative of horizontal force acting on fluid, which is equal to minus of m dot v relative in the outlet in the x direction minus m dot v relative at the inlet in the x direction. Okay, so this is what you have. Now tell me one thing, if cart is moving with velocity v, what is the relative velocity with which fluid enters the control volume? Tell me. If cart is moving with velocity u, what is the relative velocity at which fluid enters the control volume? Fluid is trying to move with a velocity of v and try to enter the volume, but the volume is moving with velocity u. So what is the relative velocity at which the fluid enters the volume? V minus u, correct? U minus v nahi hai, v minus u. Okay, if cart moves faster than the fluid, then fluid can never touch the cart. Okay, cart will move. So this is v minus u. So if this is v minus u, this is also v minus u actually here. Okay, because we are assuming there is no friction on the plate, on the vane there is no friction. So if this is coming out at v minus u, this is also leaving out at v minus u velocity from this. Okay, yeah, v minus u. So now if you see, minus m dot is same in both the cases. So m dot times of relative velocity at outlet in the x direction. So let us suppose if this angle is theta, the direction of the flow. So if this is theta, then at the outlet v minus u cos theta. Okay, because outlet velocity is like this, and if this is theta, then the x component is in positive x direction. Okay, in this analysis we are taking x is in this direction and y in this direction. Okay, so v minus u times of cos theta minus relative velocity at the inlet, which is v minus u actually here. Now minus of, if m dot, so basically what is m dot actually? What is m dot? M dot is based on relative velocity, correct? M dot is based on this relative velocity. So rho a into v minus u. Okay, m dot is actually based on this relative velocity term. So rho a into v minus u into v minus u cos theta minus v minus u. Okay, so this if you simplify, because of this minus sign, so minus sign if you multiply here, rho a v minus u whole square into 1 minus cos theta is what you will get from this, correct? Because negative of cos theta minus of minus is plus 1. So this is 1. Now tell me one thing, correct? Coefficient of CV, velocity of fluid. Coefficient of velocity is not given, na? So that's why we are taking 1. Okay, now try to understand this carefully. This value is positive or negative? This value is positive or negative? Even area of jet at inlet and outlet same? Yes, they are same. Okay, because whatever, if you see, fluid do not undergo any expansion on the way, so that's why we can take equal areas of the jet. A positive hai na? Cos theta will be always less than 1 for this angle, some angle between 0 to 90, this angle will be positive. And what is the meaning of this fx on cart is positive? Means the force acting on the cart is in positive direction. हमको common sense से पता है कि अगर fluid, if this is going and hitting the cart will try to move in this direction because the fluid exerts a force on the cart in the positive direction, which you can see from this value actually. Okay, this will be positive value. Clear? Okay, so is this clear to you? This will be a positive value, na? Obviously. Okay, 1 minus cos theta will be positive, but 0 less than theta less than 90 somewhere. Okay, this is some small acute angle, 30 degrees, 45 degrees, whatever. So that's the case. If you calculate Fy similarly, okay, sigma Fy on cart, minus of sigma Fy on fluid. So this is minus m dot relative velocity at the outlet in y direction minus m dot relative velocity at the outlet, sorry, at the inlet in the y direction. Now if you see this, at the inlet fluid is completely coming in horizontal direction, correct? If fluid is completely coming in horizontal direction, what is y component velocity? So type in the chat box, if fluid is completely coming in horizontal direction, what is y component velocity here? If fluid is completely coming in horizontal direction, what is y component velocity at the inlet? 0, correct? So here you can say
this term is 0. Okay, so minus m dot v are out, so rho a v minus u into the velocity at the outlet is v minus u sin theta. Okay, so v minus u sin theta will be in the positive direction. Just a minute. So v minus u sin theta, this is v minus u, so v minus u sin theta is also in the positive direction, so we should not keep any minus sign in the velocity, so this becomes minus rho a v minus u whole square sin theta. So this means this force is actually negative. Okay, so this is negative here. Clear? This is negative. Of course, we know this. So we know basically whenever the fluid is moving up, then look, for example, if you take a gun, if you fire a bullet in the forward direction, then gun will actually repel in the back direction, correct? So if fluid is leaving in the upward direction, then what is the direction of reaction force on the cut? Downward or upward? Fluid is leaving in the upward direction relatively, so force or the reaction force on the cut will be in downward direction, so that's why there is a minus sign here. Okay, clear? This minus sign indicates this value is negative, means the force is acting in the downward direction. So please explain how we got fluid outlet velocity component in x direction. Outlet is in this direction, v minus u. Okay, so I have given this angle is theta for example, then this x component is v minus u cos theta and y component is v minus u sin theta. Okay, that's it. So why are you taking rho a v minus u in m dot and not rho a v? Because in Reynolds transport theorem, in yesterday's case, I have told relative velocity here, correct? So this mass flow rate is calculated based on the relative velocity. If cart or any object is stationary, then this relative velocity is actually equal to the absolute velocity. But if cart is moving, then the relative velocity is v minus u. That's why we have written rho a into v minus u. Clear? Okay. Did you get Susmit? Ramanujan, did you understand this? Why we have taken this v minus u basically? Is each and every point getting cleared for you? Each and every doubt should get cleared in this session. Okay, if you have any doubt, it's okay if you commit mistakes now, but don't commit any mistakes in final exam. Okay, sir, मैंने plus minus n भूल गया था, मैंने ये minus के जगह में plus किया था. Don't do these things unnecessarily because you lose marks. Okay, so don't do that. Try to substitute correctly and carefully. Okay, if you know the concept, doing linear momentum, angular momentum equations is very, very simple actually. Okay, the main problem why students leave this is they don't understand this case of applying the Reynolds transport theorem correctly. Okay, so in tomorrow's session I'll put some questions where you have some external forces also, because here there is only fluid force. Okay, but sometimes because this is completely subjected to atmosphere, so we don't have any issue. But sometimes what happen, you can have, let us suppose if there is some flow like this, then here the pressure could be something different, here the pressure could be something different. Complete complete momentum change did not happen in the same pressure, so that then you instead of the sigma fx you have some more terms, so we will see that also. Okay, but these are the most frequently asked models till today. Okay, and normally these are the level they ask you in GATE XE examination. In mechanical not even till this level, some very low level they ask you in control volume analysis, but in XE we have to take care a little bit. So one time how to take sign on fluid and cart, both are opposite, that's it. Force acting on cart is minus of force acting on fluid from Newton's third law basically. When the cart is connected by spring, I didn't get what is spring, sting. Okay, yesterday I have told you if a cable is connected tight to the cart, then what is the velocity? I have explained you, correct? When there is a tight string, then what is the tension in the string? That I have told you in yesterday's class. So please repeat once about how to take the relative velocity. Simple here. Basically, this fluid is trying to enter with velocity v, but the cart is actually moving. These two velocities are in the same direction, so relative velocity is v minus u. That's it. Let us suppose if you are chasing, okay, one person is going at 60 and you are chasing at 50, for example. Okay, then the relative velocity between you is 10. Okay, if you are in the opposite direction, you should add this. Okay, fine. Okay, so let's go for the next question. Okay, this question is done.
Then this question, consider the fully developed of a Newtonian fluid density mu to a smooth pipe of diameter d and length. The average velocity of the flow is v. If the length of the pipe is doubled, keeping v, d, rho, nu constant, the friction factor. In yesterday's case, we have done one question like this, na? जिसके aspect में है उसको ही velocity को add करना है. Yes, of course. If they are in the opposite direction, but if they are in the same direction, you have to subtract the velocities. Okay. Is everything clear? Fine. Okay. Clear? So let's go for this. First of all, what is friction factor? Oh yeah, what's going on? So if you see, friction factor is equal to, now this is a fully developed flow of a Newtonian fluid through a smooth pipe of diameter d, length l, average velocity is v. If the length of the pipe is doubled, keeping these parameters constants, what is the friction factor? So nothing is mentioned, so we can actually take laminar flow. Raghav, booth, Sandeep sir chale gaye kya? हाँ, actually he is outside with some other work. Acha, Raghav, you are booth. Then I am shaitan. Okay, don't mess. Fine, just kidding. We all are friends. Okay, fine. So basically, if you assume the flow to be laminar, then this is. Someone solve that question. Which question? Oh, sting one. You can find in basically yesterday's session. Okay, so we can easily find that. In yesterday's session, I have solved that question. So kindly once go to the yesterday's session, you can easily find that question. Okay. So now, if you see this Reynolds number, so this is 64 into dynamic viscosity by rho v d. Okay, so basically this 64 is a constant. So F is proportional to mu by rho v d. Okay, now they have given you these terms are constants. V, d, rho, mu are constants. Then the friction factor. Tell me one thing. Whenever v, d, rho, mu are constants, will this Reynolds number change? Whenever the average velocity, density, diameter, and velocity change, I mean, if they, basically, if these things doesn't change, then will there be any change in the Reynolds number? No. Correct? So when there is no change in the Reynolds number, will there be any change in the friction factor? When there is no change in the Reynolds number, will there be any change in the friction factor? No, that's it. Remains same is the correct answer. Okay, because when these dimensions are not changing, doesn't matter whatever is your length of the pipe. Once the flow is completely developed, then things do not change. They actually move in a smooth way. It remains same. Okay. Now this a simple question here. Dekho, the potential function for a two-dimensional incompressible flow is given as phi is equal to, this is velocity potential, not complex potential. So phi is x cube by 3 minus xy square. Okay. Now magnitude of velocity at 2, 1. So both easy question. So 2020 mein aaya tha. I told you na 1920 papers, 18 till 2020 it is very easy, but after 2021 slightly the level got changed. Okay. Now if you see 2025 is equal to x cube by 3 minus xy square. Okay. So this implies u is equal to dou phi by dou x, which is x square minus y square. And what about v? Dou phi by dou y, which is minus 2xy. Okay. So these are the terms that are with you. So at 2, 1, at 2, 1, if you substitute this point, u is equal to, so 2 square minus 1 square, which is 3 meters per second, and v is equal to minus 2xy, minus 2xy, which is minus 4 meters per second. So if you calculate magnitude of velocity, this is square root of u square plus v square. So this is 5 meters per second. Okay, so 5 meters per second. So directly you can write 5 meters per second. That's it. 5, है ना? Okay. So potential flow भी cover कर दीजिए. Okay, I'm showing the potential flow next. Okay, next question itself is potential flow question. Column 1 represents a list of elementary plane flows. So these are elementary plane flows. And column 2 represents flow past the geometries obtained by superposition of this elementary plane flows. Match correctly. Okay. So previous question, why we assumed lambda? Because nothing is given. So that's why. Even for the case of turbulent flows, friction factor depends only on Reynolds number. Okay. That's why. Function may change. Okay. It can be some other function. But so basically if you see,
my intention is to tell you that this friction factor will be only a function of Reynolds number. Okay, and whenever these quantities are same, then this Reynolds number do not change. Okay, Ashwin, clear? So basically, if you see uniform flow plus source, this gives a Rankine half body. A Rankine half body. So basically, this f of z complex function is uz plus m by 2 pi ln z. M by 2 pi ln z. Okay, so m by 2 pi ln z. Okay, next, this uniform flow plus doublet. So what does this uniform flow plus doublet gives you? This gives you basically a flow past a stationary cylinder, correct? So flow past a cylinder. Flow past a cylinder basically if you have a doublet. So if nothing is mentioned in question regarding the friction factor, then among fanning and dash is friction factor, which one should we consider? Dash is friction factor. Okay. Now uniform flow plus source plus sink. Plus sink. This gives you a Rankine oval basically here. Many people get a doubt here. Sir, kuch acha potential flow ka question lao. There are questions I'll bring. Okay, just a minute. Uniform flow plus source plus sink. This is Rankine oval. Many of you might have a doubt in this mind. What is the difference between doublet and source plus sink? Generally, source plus sink combination is doublet. But what is the difference? A source and sink combination is called a doublet only if this source and sink are of equal strength and they are kept very close to each other. Okay, but when I write source plus sink, things can be different. Okay, clear? Did you understand the difference between doublet and source plus sink? Doublet, so basically the difference between source and sink will be very close, and the source and sink will be of equal strengths in case of a doublet. Okay, so basically here if you see, this complex potential function is uniform flow plus this doublet, which is some c by z. So this c by z, we write it as 1 u a square by z, whatever you write, u a square by z. Okay, then this is Rankine oval. F of z is uz. F of z is uz plus, if source is of strength m1 by 2 pi ln z minus z naught plus m2 by 2 pi ln z minus some other complex number z1 or z2 depending upon the location of source and sink. Okay, so normally this source and sink at torsion is doublet. Need not be a torsion at any point, but the source and sink should be of equal strengths and they should be placed very closely. Okay, at any point, doesn't matter. They can be a torsion or they need not be a torsion, doesn't matter. But basically, they has to be very close to each other and strengths of them should be equal. Okay, and finally, this uniform flow plus doublet plus vortex. This gives you the combination of flow past a rotating cylinder. Flow past a rotating cylinder. Rotating cylinder. Okay, so this is what we have, and generally here the function is f of z is equal to uz plus, for doublet m by 2 pi, for doublet we have u a square by z, and this is minus I times of circulation by 2 pi into ln z is the complex potential function for this. Okay, so circulation concept is also there. Some way to prepare the extra syllabus of mathematics for XC. Basically, I haven't taken any YouTube course till now because I was dealing in paid batches till now. So you can attend the sessions at night that we are doing at 11 p.m. so that you can get idea on each and every question. Okay, fine. So these are the complex potential functions. So basically you can match now. Okay, so you can easily match. So source, sink and uniform flow, this gives you a Rankine oval. Doublet plus uniform flow, this gives you a cylinder. Source plus uniform flow, Rankine half body. Doublet plus vertex plus uniform flow, this is rotating cylinder. Okay, so these are the matching. So P should go to 3.
So P should go to 3. Then Q should go to 4. So Q should go to 4. This is the correct answer. So R should go to 1 and S should go to 2, obviously, by default. Okay. So what is A in doublet equation, sir? A is basically the radius of the cylinder. Okay. So if you assume that the flow is happening on the surface of a cylinder, A is the radius of that cylinder. Okay, fine. So A is the radius of that cylinder. Okay. Clear? Side please. Okay, you're asking me to get out, huh? Fine. Are those equations enough to remember? Yes. Normally, if you attend potential flow sessions, you could easily get them. Fine. Now, someone is asking for some acha question of fluid mechanics. I mean this potential flow. Well, there are these two questions. Good. This is one question. Which one of the following figures represents potential flow past a circular cylinder with clockwise rotation of the cylinder? So the cylinder rotation is clockwise actually. Okay. So cylinder rotation is actually clockwise. So tell me, out of these things, which is the correct option? Stream function is equal to minus lambda sine t by r. What is lambda? For which for doublet potential? For doublet potential function is lambda cos t by r and stream function is lambda sine theta by r. Yes, correct. Lambda is doublet strength. Okay, I use the strength of the doublet as m actually, strength of source and sink. Clear? So D is of course the correct answer, correct? Because whenever the fluid is trying to flow in this direction and if the rotation is clockwise, the fluid will try to deflect this level actually. Okay, so this is the case actually when the cylinder is rotating anti-clockwise. Okay, and this is also the case when the cylinder is rotating anti-clockwise and has a separated stagnation point. There is only one stagnation point in this case. One stagnation point in this case, and this happens generally when v theta is equal to 2 times of this free stream velocity. Okay, so let us suppose if flow is coming at u infinity, then v theta is equal to 2 times of u infinity, and this is not the case of any case because whenever the cylinder is rotating, it will try to push the fluid back. So that's why there is a streamline which is getting deflected like this. Okay, actually I might have shown you these equations also. Okay, but maybe next time when I'm talking about some detailed course or comprehensive course or maybe some crash course, I'll show you. Actually I can show you the shape of this streamlines. Okay, normally I know how to run some simulation in MATLAB, so I can take a picture from there and I can display. Clear? And one more acha question. Solve this question. In a two-dimensional potential flow, a point source is located at origin. Okay, so this is a point source as shown in the figure. The strength of the source is 2 centimeters square per second and a uniform flow with velocity 1 centimeter per second is approaching towards the point source at an angle of 30 degrees from the horizontal axis. So basically this from the horizontal axis, this is 30 degrees, means basically in the positive sense this is 180 degrees. Okay, sorry, 150 degrees. What is the distance of the stagnation point in the flow field from the point source? Okay, so from the point source, basically this point source is at origin. So from origin, what could be the stagnation point? First of all, you should identify where is the stagnation point, then you can identify what is the distance between them. Okay, so solve this question. You asked for a good question, huh? This is a good question. Solve. Meanwhile, I'll have some water and come. Solve this question. Thank you. So solve this question and tell me the answer. So stagnation point meet at the top of the cylinder now when rotation is clockwise. No, when rotation is anti-clockwise. Okay. Because fluid will try to come in this direction and this clockwise rotation will try to throw the fluid. So that's why it will not go near to the fluid. It will get slightly like I have shown in the previous diagram. So what is the option? Option A. Okay, fine. Option A is the correct answer now. Let us check first of all. What is this? High a two-dimensional flow in a two-dimensional flow. Okay. Now, first of all, if you add the complex function, potential function for this,
f of z is equal to, now if you see, this flow is coming at an angle of 150 degrees in the positive sense, है ना? So this is coming in 150 degrees. So basically if you see, uz into e power minus 5 times of 5 pi by 6. Okay, so this is the complex function for the flow, plus there is a source m by 2 pi, this is at origin, so log z directly. So this is what you need. So this is the complex potential for this, correct? Because it is at 150 degrees, so 5 times of 5 by 6 and z into e power minus 5 pi by 6 actually. Clear? Yes or no? So type in the chat box. Okay, this is the complex potential function, है ना? So basically the flow is at 5 pi by 6 degrees, so uz into e power minus I alpha, so that's what you have here. So when alpha is equal to pi by 2 and all, this is minus 1. Okay, now if you see f dash of z, if you differentiate this, this is equal to u into e power minus 5 times of 5 pi by 6 plus m by 2 pi into 1 by z. Now this is a complex number actually, but first stagnation point, this f dash of z should be 0. This means f dash of z should be 0 actually. Okay, so if you equate this exponent, this quantity to 0, then we get u into e power minus I times of 5 pi by 6 is equal to minus m by 2 pi into z. So z is equal to minus m by 2 pi u into e power minus I times of 5 pi by 6. So source is at origin. So if source is at origin, then what is the distance between the point and this location? Basically this modulus distance is nothing but this. So this is equal to m by 2 pi u, because the complex number e power minus I 5 pi by 6 has magnitude of 1. E power I theta, if you take this function e power I theta, इस बार ज्यादा स्टूडेंट सॉलिड मैकेनिक्स देने वाले हैं लगता है. I don't know the logic. Okay, so angle is taken from positive x-axis. Okay, so this is the value m by 2 pi u actually here, correct? So m by 2 pi u. So therefore mod z is equal to, what is strength of the source? Strength of the source is 2 centimeters square per second. So 2 divided by 2 into pi into, what is this velocity of the free stream? So free stream is coming at 1 centimeters per second. So this is 1 actually. So if you put 1, 2 gets cancelled. 1 by pi is the distance of the point from the stagnation point. Clear? Okay, so basically this 1 by pi is the correct location here. 1 by pi is the correct answer. Okay, fine. Yes or no? So is this clear to all of you? 1 by pi is the magnitude of the complex number. So if there is some complex number, let us suppose some stagnation point is maybe here, then this distance is nothing but magnitude of this complex number, no? So that's why we have taken magnitude of the complex number where this function is 0. So m by 2 pi u we have substituted. So this is 1 by pi directly. Clear? Okay, in complex numbers things are very easy to deal. Fine. So let us solve this question again using some Reynolds transport theorem, or maybe whatever the questions you want we can discuss. So what is the next topic you want a question? I'll search and I'll give you, because it's your interest, no? Like whatever the topic you want, you tell me, I will discuss here. So what must be learned else in potential flows? Normally this flow past rotating cylinders, superpositions and basic flows. Okay, this can be done. Dimension analysis. Okay, so XC में ज़्यादा MSQ नहीं आते. Depends. Like last year 3 to 4 MSQs आया था. RTT dimensions. Okay, so first let us solve one question from dimensional analysis. Okay, and RTT also. So dimensional analysis, I'll take one question from dimensional analysis maybe. So I'll take one question from dimensional analysis, hopefully. Dimensional analysis is yeah, here. A sphere model of 10 centimeter diameter is tested in water flowing at 2 meters per second. The drag force is measured as 5 newtons. Prototype of 1.5 meter in diameter. Okay, so meter in diameter is tested in air with dynamic similarity conditions. Okay, density of water is 1000, density of air is 1.2,
viscosity of water is 10 power minus 3 of course, and this is 1.78 into 10 power minus 5. Drag force experienced by the prototype. Okay, so drag force experienced by the prototype is dash. Okay, so see here, drag force experienced by the prototype. So okay, dimensional viscous flows, dimensional analysis. Okay, dimensional analysis, vortex flows and boundary layers. Okay, fine. Okay, these topics I'll put some more time definitely. So see here, in this case, if you see a sphere model of 10 centimeter diameter. So first of all, let us write model and prototype conditions. Model and prototype conditions. Look, I want to ask you this question. Out of model and prototype, which will be of larger size? Out of model and prototype, which will be of larger size actually? Generally, I'm asking not about this question. Normally, okay, if you take model and prototype, which size will be larger? Prototype, anyone? Yes, basically you cannot say that. Okay, it depends on your application. Normally in mechanical examples that we deal in, classical examples like ships, submarines, bodies moving in fluids, in all these cases, prototypes are generally large, but always it need not be. Let us suppose if I take this mobile for example. Okay, so normally your phone gets heated after some time. So let us suppose if I'm studying about heat transfer of those electronic chips. Okay, so normally you call that as electronics cooling, which is one very important subject in research nowadays. So if you see the concept of electronics cooling, then if I want to study the effect of heat transfer on small chips in this phone, then definitely this will be very small, correct? So I generally develop a large model. Okay, so that's why out of model and prototype, anything can be equal, anything can be large. Okay, it depends on the application. Okay, it's not always like prototype is large and your model is small, it need not be. So sometimes they can change actually. Okay, so now if you see model and prototype, so here it is a sphere of diameter 10 centimeters. 10 centimeters is tested in water. So fluid is water, so it experiences certain drag force. Prototype of 1.5 diameters, 1.5 meters in diameter is tested in air. Assuming dynamic similarity. So first of all, when you are taking dynamic similarity, this is completely submerged. Okay, so the ball is getting completely submerged in a fluid. Okay, so whenever the ball is completely getting submerged in a fluid, what are the two forces that are predominant? When the fluid got completely submerged in a fluid, and if the body is trying to move, the inertia of the body will try to move the body, but the fluid surrounding the body will try to stop the body, correct? So what are the two forces that are dominant here? So what are the two forces that are dominant here in case of this motion when some body is moving completely inside the fluid? Inertia force and viscous force, correct? Because inertia tries to move the body and viscous force tries to stop the body. Okay, so the dimensionless number that connects these two is Reynolds number. Okay, so for dynamic similarity, Reynolds number of the model should be equal to Reynolds number of the prototype. Okay, now we know the drag force acting is equal to, of course, if you perform dimensional analysis, we know this is proportional to rho a v square and Reynolds number. But since Reynolds number has to be same for the model and prototype, for maintaining dynamic similarity, drag force depends on these quantities actually here. Okay, so drag force acting on the model by, okay, we need prototype, right? Drag force acting on the prototype by drag force acting on the model is equal to density of the prototype by density of the model. Area has the dimensions of L square, so LP by LM whole square into VP by VM whole square. Okay, now these densities are given to you, LPs are also given to you, but velocities are not given to you. Okay, so we will calculate it from here. Density of model into velocity of the model into length of the model, dimension, characteristic dimension of the model, divided by dynamic viscosity of the model. Okay, so dynamic given is, or kinematic viscosities are given. Dynamic viscosities are given, Newton second per meter square. So this is equal to density of the prototype, velocity of the prototype, length of the prototype by dynamic viscosity of the prototype. So here if you see in this equation, densities are given, lengths are given, we don't know what is this velocity ratio. So Vp by Vm is equal to rho m by rho p into mu p by mu m into
Lm by Lp. So this is the term. Okay, so Lm by Lp, mu p by mu m, and dou m by op. So if you substitute here in this term, so let us see, drag force acting on the prototype is equal to drag force acting on the model into density of prototype by density of model into length of prototype by length of model whole square into this velocity square, which is density of model by density of prototype whole square into mu p by mu whole square, mu p by mu m whole square into Lm by Lp whole square, Lm by Lp whole square. Okay, so now if you cancel some terms, Lp by Lm, Lm by Lp gets cancelled. This L rho p by Om can cancel this square here. So this is drag force acting on the model multiplied with rho m by op into mu p by mu m whole square. So this is what you have here. Okay, so mu p by mu m whole square. So if you do this, correct na? Mu square by o, mu square by rho. Okay, so mu square by o. What is mu square by o? I didn't get this. Okay, mu square by o, basically this is what you are telling. Okay, so this is equal to drag force acting on the model. They have given 5 newtons. Okay, and final answer is also asked in newtons. Okay, so 5 into model density by prototype density. So model is water, so water density is 1000 and prototype density is 1.2. So 1000 by 1.2 into kinematic viscosity, so mu p by mu m. Okay, so mu p is this 1.78 into 10 power minus 5, 1.78 into 10 power minus 5 by, for water we know it is 10 power minus 3 generally. Okay, so this is whole square, 10 power minus 3 whole square. So you have to do this calculation to get the answer. That's it. Okay, so if you do this, then this cancels out this 100 times basically. So 1.78 by 100 whole square, 1.78 by 100. Okay, so this whole square of this multiplied with 5000 by 1.2 multiplied with 5000 by 1.2. Okay, so 1.320 newtons. So this value is 1.32 newtons is the correct drag force which is acting on the prototype. Okay, so 1.32 newtons is what you have. Clear? Yes, 1.32 newtons is the correct answer. Fine. So 1.32 newtons is the correct answer in this case. Okay, so generally whenever the Reynolds numbers are equal and if they are asking about the drag forces, then this is how you can directly go for this. Okay, so here also you can see, since the concept is drag, the things that are very important is density and dynamic viscosity, which are actually related by kinematic viscosity. Okay, so कौन सी dynamic similarity कहाँ apply करनी है बता दीजिए, because it depends on the application. Like whenever the complete fluid is moving inside, whenever the complete body is actually moving inside the fluid, then inertia and viscous are dominant. But in case of free surface flows and all, like ships and all these things, whenever some body is floating or when there is some free surface flow, the gravitational force comes into picture. So that's why you generally go for Froude number. Okay, Froude I think you call, whatever, FR. Okay, Jauhar. Fine. Okay, so we will end this session here for today because we have seen some good questions. Sandeep sir has solved some good hydrostatic forces, all these things, and then we talked about some control volumes. Okay, then dimensional analysis, potential flow coefficients, all these things. Okay, so we will end this session for now here, and again we'll meet tonight at 11 p.m. for solving engineering maths questions. And today, as I told you, I'm going to keep questions from those extra topics and also some a bit more higher level questions so that you learn some other new points also. Clear? So can you take some hard and extra questions? As of now, we are solving PYQs. So questions are of this level. So in Abhyas series, we will practice some difficult questions really. Okay, we are framing new questions, so we will solve those questions. Okay, and of course in potential flows and all, we can take some more tough questions also. Okay, so tomorrow I'll try to keep some very difficult questions. Okay, where people have normally, even in today's questions, people have ambiguity. Why in that cart question? Okay, when cart is taking on the when cart is this fluid jet is deflected by the vane, all these questions people have some a dilemma how to take the velocities and all, but that gets cleared. So PDF group में नहीं मिल रहा. Okay, I'll talk to the people, I'll make sure that the PDF is available. Okay, थोड़ा हिंदी में भी समझ देना please. Maths, yeah, definitely. Okay,
Please take on calculus. Yes, definitely, for sure. I'll take on calculus. See you at 11 p.m. Okay, yeah, sure. Thank you. We will again meet at 11 p.m. Okay, so 11 p.m. to 2 a.m. like yesterday something. We'll take the session and then we will conclude that. Fine. So thank you all. Look, as I told you in my class, at any point, if you have any doubt, doesn't matter how small it is, you can always ask me. Okay. So that most important slide, thank you one. Acha, yeah, forgot. Thank you. You have remembered me. This thank you most important slide है ना last में. Yes, ये वाला. ठीक है? So thank you. Thank you, Parka. Most important slide. Okay. So thank you. Obviously, yeah, I should say thank you na. 3 years you're sitting continuously and listening to my boring lectures. So test series, test 2 series. Sorry. Test 2 series. I didn't get this. What is test 2 series? Fine. Okay. So if you have any doubts at any point, you can always ask me. Okay. We should thank you, sir. Okay. Thank you then. I take thanks. Boring नहीं है. Interesting like. Sir, test series दे सकते हैं क्या? अभी XC की. Better not now. Better follow the PYQ sessions. Okay. As of now, because as of now at this point, if you solve PYQs, there is good chance of getting some new marks. I mean some more marks actually. Okay. That's it. Fine then. Okay. Are you all understanding everything? That's the most important part that should be covered. Okay. So 2019 potential flows question. Please repeat, sir. This one. 2019 potential flow means this one, na? Wala. No, this is 17. This is also 17. Then where is 19? This one. No, this is 2020. Then where is 19 actually? Achha, I think we didn't keep. Okay, I'll see what is the 2019 potential flow question and I'll try to put it. Okay. Test series questions practice फिर से कर लूं क्या? Yeah, if you have doubted some questions, you can do them. Okay. Your maths lectures are very helpful. Thank you. Sorry sir, 2017 one. Okay. So 17 में क्या आया था? 17 this one. This one actually. So please take a small session on flow separation and drag and lift, streamline and bluff bodies. Yeah, I'll take that. Okay. So I'll try to take that some session on this. Hopefully I'll give you some recording. Okay, because schedule is completely packed. Okay, from with live classes. So maybe I'll try to upload some recording on that. Okay, no issue. The other one. Okay, not this question. The other question. This question. Yeah. So basically, if you see, this is the complex potential function. This is for the uniform flow and this is for the source. Okay. Now, how you calculate the stagnation point is equating f dash of z is equal to 0. So if you differentiate this function, this u is a constant, this is also constant. Derivative of z is 1 plus m by 2 pi into derivative of log z is 1 by z. Okay. Now at stagnation point, this is 0. So from that we have calculated z. What is the value of z? Okay. So z is this location where the point is actually stagnation point. So if you want the magnitude of the complex number, since this magnitude is equal to 1, so m by 2 pi u, we have substituted the values. That's it. Okay. PDF sent karna aaj. Yeah, definitely I'll share the PDF. No issue. Okay. So fine then. Thank you all. We'll meet again at 11 p.m. Night to solve some engineering maths questions. And before that, you have sessions at 1 p.m. and then again at thermodynamic sessions. All these things. So please do attend. Okay. So FM का extra topic covered नहीं किया हूँ. आप करवा दो ना in short. Normally these questions, this Reynolds transport theorem, okay, then after this Reynolds transport theorem, this potential flows, all these are basically extra topics. Acha, you want theory for that, na? That's what you're asking. Is it? Manohar? Fine. Okay, so whatever is there, I'll try to upload the recordings only because even my schedule is also packed now. So if I find some time, then definitely I'll try to put some things. Okay. Fine then. So thank you all for your patience and love. Then we will end this session. Okay, thank you. No more comments now. Fine then.
Take care. Thank you all. Okay, we'll meet again at 11 p.m. and after that, before that we have some sessions also. So attend. So tomorrow, please take the question jet striking frictionless plate. Today we have taken this jets. Jet is striking a frictionless plate. No, maths hoga na aaj? Yeah, hoga 11 baje par. Ravneet, we have taken this fluid jet, hitting the, veins. All these questions today. That cart question. Okay. Then one more question I have explained you. All these things. Okay. So thank you all. Thank you. We'll meet again tonight at 11 p.m. and we'll solve some questions. Okay. Thank you. Thank you all. Take care. Bye.